We would be starting in a few minutes. Members in the audience, please flock in into the auditorium. Yes, ma'am. I'm making a final call for the audience members who would be starting the next session right away. Please get into the auditorium.
I welcome you back again to the Odisha Literary Festival 2022 themed My Country, My Kahani for this session. The Odisha Literary Festival 2022 is being hosted by the New Indian Express, Bhubaneswar. Now, let me be very frank. Do we not crave for happiness all our lives? Do we not run after happiness for our entire lives? Do we not seek it? Do we not try to fetch it from wherever we can? Let's be very frank. Who doesn't want to be happy all the time? To speak on the same, in the next session, we have with us Aparna Piramal Raje to speak on How to Be Happy, My Experiments with Darkness. Educated at the Oxford and Harvard, Aparna Piramal Raje is the author of Working Out of the Box, 40 Stories of Leading CEOs. She is a regular columnist with The Mint. She contributed to the UK's Weekend Financial Times, a global publication. Over the past decade, she has fostered the awareness of design, especially workplace design in companies in India. Now, Aparna aspires to leverage her first-hand experience of mental health to make a difference in this sector. May I also request Ms. Kaveri Bamzai, the festival coordinator, to join her on the stage. This session has a good 30 minutes and will be inclusive of the last 5 minutes for the audience for the questions. Yes, but you have to be very good to deserve that. Otherwise, I'm going to take all the questions myself. So you better get in place, otherwise no questions will be allowed. I'll do all the questions. That sounds great. Great. Aparna, it's such a delight to have you here. I spent last night reading your book, and I was in parts harrowed, but also in parts admiring of your courage to both live through it and to then write about it. Because I think there's very little in this area of mental illness, which is a lived experience. And for you to actually write about it, write about all the things that you've been through, everything that you've tried, you're quite a therapy junkie, you have to be, is quite remarkable. I want to take you back to how you started the book, where you have this episode in Munger at the Bihar School of Yoga, which I'm also a great admirer of. I think they do a terrific job. But I want to take you back to that moment and what it felt like when you thought, this is something that even I have not experienced before. Yeah, thank you. Thank you, Kaveri. Thank you for having me here and for the Lit Fest. It's really been a wonderful way to get to see a little bit of Bhubaneswar too. When I was in Munger, I was in an ashram and I had gone there to kind of make myself stronger. And I was going through this phase where I was actually psychotic. I was having voices in my head. There was mania, there was delusion, there was hallucination. But at the end of it all, to me, it all seemed very normal, right? So the people around me could see that something was going wrong. But to me, it actually felt normal. And it was only when I realized that, I couldn't travel and that my husband had to come and get me, fetch me from Mumbai and come to Patna and get me, that we realized that, this really needs a lot of help and attention. So what I'm trying to say about these phases that you go through your life, when the person is going through them, they don't really realize what is happening. They don't know what is happening. Exactly. And it takes what is now called an intervention for you to get to a point where you seek help. But this was not the first time that something like this had happened. You had had episodes of, this anxiety. You'd had episodes like this before. What was so different about this that sort of pushed you to recognizing that this is a medical condition? I think earlier, we could we could kind of manage it with maybe taking some medication which may or may not have been prescribed or whatever, but just helping me to sleep, basically. But this time it was really intense. It was very intense, it was very raw, and it was totally uncontrolled. So there's just no way that anything apart from tranquilizing medication would have
sorted me out at that point in time. And when you need that medication, then you realize that, okay, this is a medical issue and not a personality issue. Because one of the biggest myths with anything related to mental health or mental illness is that हम लोग सोचते हैं कि ये उसका स्वभाव है, ये उसका personality है, वो so and so moody है या so and so कि मतलब उसको गुस्सा बहुत होता है. You know, we think that these are personality issues and not a medical condition. And so I think until then we really were trying to understand, is it a personality issue or is it a medical condition? And then when I reached a stage where I required the medication and I required the medical care and I required a psychiatrist, then we said, okay, theek hai, now we understand that this is a medical condition and let us treat it in that way. But getting to that point where you recognize that it's a medical condition, you often have people around you telling you, Arey, why didn't you come to us before? What were you doing? Didn't you see the signs? You know, there's a lot of blame apportioning that happens. And in such a situation, the family also is quite guilt-ridden sometimes. You know, your mom or your dad or your sister, you know, did they ever feel, you know, we should have pushed her to this point to taking this help earlier? Because the family, I mean, the person who's afflicted suffers, but the family around you suffers as intensely. Yeah, I mean, if there's one thing I've written in my book, and if there's one reason to read my book, is it's because of the role of the people around you also. ये किताब सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये जो भी परिवार और या समाज में जो भी हैं, जिनके यहाँ उनके करीब में I think in my case what happened is that even I wasn't that keen on medication because, you know, a lot of people earlier were saying that if you take the medication, you may not be able to have a family, it'll be harder to get pregnant. Or you get addicted to it, you become dependent on it. There's so many there are a lot of things, reasons why we don't want to take medication, right? So for a good 10 years, or 13 years actually, I didn't take medication. So I'm not here to say कि दवाई ज़रूरी है कि दवाई नहीं लेना चाहिए. I think it all depends on your condition. And अगर आपको डिप्रेशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाई लेनी ही है या नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है. But what I'm saying is don't hesitate to go to a doctor. Don't hesitate to go to a psychiatrist. Don't hesitate to go to a therapist. You don't need to have, you know, wait for a crisis before you go to one of those people. Right. I want to ask you, because a lot of families have gone through this as well, you know, when is the tipping point? And that brings with it so much pain and trauma for the family. Again, I focus on the family. You know, what is your advice to them? Because they, you know, the person who's afflicted is there, but the family carries this guilt around for so long that I wish we had done this earlier, I wish we could have done this earlier. What's your advice to them? I think you do the best you can. Like, I think, to be very honest, I don't think my mother's read my book because she finds it too painful. Yeah, you know, to relive all that. Yeah, I don't think she wants to read it. So I think that you know, certainly my sons are too young to read it, but my husband and my sister have read it. I think the thing is, you know, the families can support only as much as the patient also wants to listen. If the patient doesn't want to listen, it becomes very difficult for the families. What can the family do, you know? You have to try and get somebody else to talk to the patient. Maybe you get another doctor or a family friend who has some medical experience, or somebody else who's gone through something, and get that person to listen to them, because it's very, very, very difficult for the family. Yeah. Let's talk a little about you, because at the heart of it, there's you and how you've been coping with this and living with this, suffering through it. And, you know, at moments you've almost contemplated, sometimes even, you know, just ending your life, looking at which is the best terrace to jump from. Terrifying. Yeah. Yes. I mean, I found those very difficult to read. What was it like to revisit that? Actually, writing it was good for me, I think, you know. You won't believe that I was writing this book, मैं ये किताब लिख रही थी जब मेरा 8th standard का बच्चा अपना
कोविड में हम लोग बैठे थे, स्टडी में शेयर कर रहे थे, और वो अपनी क्लास कर रहा था और मैं अपनी कहानी लिख रही थी, तो दोनों चीज़ साथ में हो रहे थे. सो इट्स नॉट लाइक आई जस्ट लुक्ड एट इट एज कि देखो मुझे ये कहानी लिखनी है, मैं बहुत सालों से लिखना चाहती हूँ, तो मुझे लिखना है ही. जब मैं शुरू कर रही थी कहानी लिखने में, आई वॉजंट एबल टू डू इट बिकॉज आई वॉज टू क्लोज टू द मटीरियल, आई वॉजंट डिटैच्ड इनफ. But by the time I started writing it again during COVID, I was quite stable. And I've been in a good place. I've been stable for now 4.5, nearly 5 years. So, congratulations. Thank you. Takes a lot. Thank you. Thank you. Yes, and thank so, you. Thank you so much for that applause. Thanks. You have to read it to know what she's talking Yeah, I about. mean, I'm very sorry the copy of the book did Yes. not reach. But the bookseller has said if you want to leave the mobile number, he'll get a copy to you. Of course, it's also available at Amazon. It's available online. Online and Chemical other Khichdi, shops. don't forget to buy it. Yeah. Because I think we all underestimate, you know, our mental health, and we sort of don't tend to take care of it, and sometimes not in time. Yeah. Yeah. So anyway, so yeah, I think the question is that there have been times in my life when I have been pretty unhappy, and you know, you can think also like you might have everything in life. Yeah. Like I think from the outside I had everything in life. I studied at Oxford. I studied at Harvard. I And was did very CEO. well. You were CEO of your company. I was CEO of my company. One of my former colleagues is here in front. And I had 2 beautiful children. I had a husband who was very supportive. And still, you know, I found myself on the terrace of my building saying, if, you know, how high is this? This is only 3 or 4 stories high. If I jump off this building, will I actually end my life, or will I end up in a wheelchair for the rest of my life? So, you know, and that was the thing that probably held me back. So I think that what I've learned, and the reason why I was feeling that way is because I really felt I wasn't good enough, you know, and I think there's one message I really want to get across to people, and especially to young people, is that we often compare ourselves to other people, and we think we're not good enough. You know, we're not rich enough, we're not smart enough, we're not attractive enough, we're not, you know, whatever it is, we're not fluent in English enough, whatever it is. We have so many ways that we can kind of be tough on ourselves. And I think at some point we just have to realize that we are enough. Yeah. You know, my therapist Very actually... well said. Yeah, that my therapist actually told me, Aparna, I want you to stand in front of the mirror and every day tell yourself, may I love myself and accept myself and not judge because I am good enough. You know, and really, I think that is the message that we have to give. Because especially ये social media के ज़माने में, you know, we are just seeing किसके likes हैं, किसके कितने likes हैं. And it is the most difficult thing to be living when we are constantly judging ourselves. It is not that nobody else was judging me. It's not like the world around me was judging me. I was judging myself, you know. And if I had to be happy, ultimately, I had to love myself. And that's the hardest thing, right? And you've talked about the various therapies, and I love that, you know, the kind of detailing that you've done. In India, I hope you know, and this is one of the remarkable statistics in her book, there's only one psychiatrist for 200,000 people. I mean, that's shameful in a country which leads in mental illness, as far as I know. It's one of the leading, it's a dubious distinction, but it is. So, you know, the therapies that you've sort of undergone, and you tell other people that they can look at these as well. I want you to quickly run through them so that people know exactly what because it's not just a memoir, I want to tell people, it's also a self-help book in a way. And it's a guidebook, actually, for anyone who's either suffering from mental illness or knows someone who's suffering from it, or has a member of the family who's suffering from it. It really is very, very useful. So just talk us through some of the therapies. So, you know, Kaveri, like, so my illness is called bipolar disorder, and it only happens to, let's say, 1% of the population. But the way I look at it, 100% of the population wants to be happier, right? 100% of the population wants mental wellness.
And yet stress, anxiety, depression, burnout, these are all things that we have to deal with in our daily lives. Either we have it or time to time it happens, right? I'm not saying it's a permanent thing, but time to time these things happen. So what I did was I put together this model of saying there are these 7 therapies. And these are all everyday therapies from everyday life. So what are these 7 therapies? So first is the role of the medical professionals. Let's say you need a psychiatrist, okay, you go to a psychiatrist, that's one. But even if you don't need a psychiatrist, you can go to a therapist. You know, you can go to a counselor. It is not like घर में कुछ होना चाहिए कि किसी का divorce हो रहा है, उसीलिए हम लोग counselor के पास जा रहे हैं या therapist के पास जा रहे हैं. Anybody can actually go and talk to a therapist or a counselor, and these are all available now. Yeah. Online, you can find them. You know, there are many companies doing it. Amaha or Your Dost, for example, Therapize. In my book, I've listed many of these resources. So going to a counselor, anybody can talk to, and these therapists have really, I think, changed my life over a period of time. Dusri cheez, I think, is love therapy, is the role of the caregivers in your life. Are they supportive? That's really, really important. The third thing, I think, is lifestyle therapy. I don't know if everybody appreciates how much discipline and self-care makes a difference to one's life. Yeah. You know, sleep, there is no mental health condition that is not related to sleep. Yeah. Sleep is one of the first things that gets triggered, and sleep is one of the first indicators that something is going wrong. That That's you should have Aparna, I find it very offensive when people boast about the fact that they don't sleep enough and, you know, that they don't need it. Yeah, yeah. I mean, it makes no sense to me. It's not a great thing. Yeah, yeah, I tell people I need like 7-8 hours of sleep, you know. Yeah. I can't take a flight at this time in the morning because what will happen to my sleep? Exactly. But, you know, so, I mean, there was a time in my life, I think Girish knows, I used to take these flights at 7 in the morning and go to Nagpur and come back, and it'll be midnight by the time I come back. I can't do that anymore, you know. And why should you punish yourself? Yeah, so I think the point is that sleep is really important. Exercise is really important. I mean, exercise is like taking medication, really. Like, honestly, if you don't want to take medication, then please exercise. Right. You know, and nutrition, obviously, is very, very important. The other thing is, but having some play and joy in your life, right? That self-care part, like looking after yourself, having a hobby, whether it's music, whether it's reading. We're at a Lit Fest. Whether it is movies, whatever it is, but doing something actively. And even when I say movies, I don't mean watch Netflix on your phone is not a hobby. Okay, you cannot put that. That doesn't count as self-care. So these 3 things are things that help you to survive. Okay, the medical part, the family part, and the lifestyle part. But if you really want to thrive, if you want to reach a stage where today you can stand up on a stage and say, okay, you know, I have a mental illness and I'm happy to talk about it, you need other things in your life. You need the role of work. Workplaces can be very stressful, but work can be very, very therapeutic. You know, so I think work therapy can, you know, if you can find that balance, that's really important. I think you can have really good spiritual therapy in your life. Yeah. I think spiritual therapy is so important. And we are blessed to be living in a country where we have all those resources available to us if we want to. She has a lovely thing called a spiritual playlist in the book, which lists a gamut of songs, you know, from O Palan Hare to to other bhajans, to A.R. Rahman songs. So it's really music that sort of calms you and, you know, sort of connects you to if you don't want to go to a psychiatrist, then you please find something that you do that is the equivalent for me of sitting in your jhula and listening to music. And if You're that a Gujarati, that's why you need a jhula. No, I think I'm just a wannabe Gujarati because I have a jhula in my house. So I love that wannabe Gujarati. Yeah, I'm a wannabe Gujarati. I grew up with a lot of Gujaratis. So spiritual therapy is really spiritual therapy is really, really important. And it's underrated. Yeah, it's very underrated. You know, the way I look at it is that medical therapy will help you deal with your symptoms. The medication, the drug. Talk therapy will help you understand your trigger. Psychologically, why is this happening? क्यों हो रहा है? आपके मन में ये विचारे क्यों आ रहे हैं? But the real understanding, spiritual therapy will tell you why is your gun loaded. Yeah. Your gun should not be loaded in the first place. Right.
time. Okay, so I think spiritual therapy takes you to a very, very deep place. What is happiness? What is success? What is purpose in life? How do you understand these very, very important issues of life that make us a lot happier? And also, spiritual therapy is about being happy for no reason. See, we are all, it's easy enough to be happy if you do, if you lose 5 kilos, you'll be happy, yes. if your child does really well in their academics, huh? What? Make it 50 in my case. 50, make it a lot more than 5 in my case. So if you lose weight, you're happy. If you go for a holiday abroad, you're happy. If you get a promotion, you're happy. So if there are many reasons in your life, you are happy. But can you be happy for no reason? Yeah. I mean, finding joy in simple things, as you said, Yeah. just in your child's laughter or a walk in the park, Exactly. little things that you mentioned. Just be a joyful person, Yeah. right? Like Doesn't mean that you have to be ha ha ha, but just be like a joyful person, Yeah. exactly. For no reason you find yourself being happy. I'm not saying you have to be, as you said, laughing all the time, but just be, happy without having a particular reason to do so. Anyway, so that's spiritual therapy. I think the really important thing also is the role of the other people in your ecosystem, which I call the allies. Allies. You know, Very your nice. friends, Yeah. your mentors, your networks. This is really important because, not the family can't do everything by themselves. So having those allies in your life are really, really important. And the last thing, most important thing, is the talk that is going on in your head, the conversation that you are having with yourself. So for the last 10 years, I've been maintaining a journal where I just share my thoughts and my feelings, why I'm feeling what I'm doing, and what I can do about it. You also record yourself. Sometimes I do, yeah. Yeah. Sometimes I record myself, but sometimes, a lot of the time these days, I try and write it. And writing just a journal Yeah. or sharing your thoughts somewhere, it gives you a lot of rigor. It gives you a lot of empathy also, but it's just a great place to let go of emotions, Yeah. to find a little bit of detachment. Right. And most of the times when we're unhappy, it's because of those emotions in us. Yeah. You also talked about the 3 pivots, which again, 3 Ps, which again I found very interesting. Would you like to mention those? Pivot? Yeah. Yeah. The 3 Ps are slightly different. They are if you want to change careers. Was Yeah. that you want to talk about that? Yeah. Okay. One is pivot, I made a Portfolio. note, portfolio of activities and prototype. Okay. I like those 3 Ps. Okay. So the 3 Ps are, I'm just shifting gear a little bit. It's for if you want to change a career, okay? If you want to go. But you know why I say that's important? Yeah. Sorry to interrupt. Yeah. Because a lot of our mental illness also comes from our validation at work, right? So, I mean, I may be in a seemingly great job, but I may be, really miserable, So how do I pivot, as you say, and what you call the jungle gym Yeah. syndrome, right? So I think a lot of it, in life, we are not able to adjust to the things around us that Yeah. are changing. Okay? Now, what happened in my life was that I grew up thinking I was going to be this great entrepreneur because I had a family business. My father, my uncle, everybody, my grandfather, they were all business people, and I was going to be a business person. My mother used to write about business people and family businesses. I studied at Harvard, so everything felt like destiny was taking me in one direction. But then I actually started working, and even though I enjoyed some parts of it were not suited out. I was not cut out to do what I thought I always had to do. So I suddenly had to change my entire sense of who I was as a person, and I had to really make this pivot. Now, we use this word pivot for startups. Startups are going from one place to the other. So I thought that the only way I can pivot is really take the help of a lot of mentors who advised me. I then also decided to live not a life where I was just doing one thing, but that I was doing like a portfolio of yeah. activities. So today I write, I teach, I speak, and I'm involved in a little bit of philanthropy. So that is my portfolio. And the other thing is what I've learned, and I think probably this is the one thing for the young people really I would like to reach out to, is can you think of yourself as a prototype? Okay, as a prototype is something that is part of an experiment
that is not fixed, that keeps changing. So every time I looked at failure, I said, I've not failed, I'm just a prototype. Just a work in progress. I'm a work in progress, and whatever I've done, which has not worked out for me, I'll learn something from it and put it, every time I do something different, I'll use that knowledge. Right. So, I think of myself not as a failure, but as a prototype. And then that means I keep learning also. Right. And there's no age. I mean, it's not that, oh, it's too late for you or you can't begin again. Often we also have that sense that time is running out. And especially for women, this has been my experience as well. We feel that, there's this biological clock or, there's a time to have a family, there's a time to do this, a time to do that. We feel that time's running out. We feel we have to do it all as soon as possible. You don't have to, right? No, absolutely. You can take your time. Yeah, absolutely. I think take the scenic route. I think that if you do things in a slow way, I think you actually benefit more. Yeah. Right. Okay. So before I ask the audience to ask a few questions very quickly, I also want you to, is there some, you've talked about chanting as a big help. And you've talked about the Hare Rama, Hare Krishna. Is there one mantra? They are also my mantras. So I think it really depends. I listen to Sonam Kalra and the Sufi Gospel Project all the time to get me motivated. So I think it's about finding those mantras, and they will come to you, Right. What I would say is, rather than taking up one mantra, is look for the mantra and the mantra will come to you. Right. You also talked about the Bhagavad Gita shlok that changed your life. You want to mention that? Yeah, there was one shlok which my yoga teacher told me, and I was telling her all these problems about, this family business thing, and, what have I done? I've been like a big failure. I'm no longer the family business. My family wants me to leave the family business. And then, and I said, how do I look at dharma? And she gave me a shlok which said that, basically you have to find your own dharma. Is it truth? Is it something more? What is it? And how does that actually apply to my life? So I really started thinking about that a lot, and I think that has been a big part of my journey. Great. I'm sorry we can't take questions in this session. We're out of time, but I would urge you to, one, read the book, get it, read it, and if Aparna is kind enough, perhaps talk to her. Yeah, you can always to her. You can always find me on social media. Please, I'm on Instagram, I'm on LinkedIn, I'm on Twitter. I'm very happy to hear from anybody who wants to get in touch. So thank you so much, everyone, and yeah. Okay. So insights into mental health and happiness is definitely something we all are in need of these days. So thank you, ma'am, for such insights. Now may I request the resident editor of the New Indian Express, Bhubaneswar, Sibha Mahanti sir, to please present the mementos. Thank you very much. I'm going to recommend. Sir, please. Can we have a huge round of applause, please? Thank you so much, everyone. And again, I highly recommend the book. So please do go and order it online. Thank you. Thank you, ma'am. Two roads diverged by in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. What bewitching lines from Robert Frost. A crowd takes a beaten track, and a man with vaulting ambition and vision takes the one less traveled by. To share their tales from the less traveled by tracks in this session titled Off the Beaten Track, Innovating Life, we have with us Mr. Anil Pradhan, educator and entrepreneur, Mr. Jubanashwa Mishra, entrepreneur and author.
Mr. Anil Pradhan is an Indian engineer, innovator, and revolutionary educationist. He is the founder of the Young Tinker Foundation. The team at Young Tinker Foundation has impacted the lives of more than 150,000 students across the India. He was also the chief designer of VSLV, India's first multi-purpose student rocketry mission, and he developed a satellite to monitor the Hirakud Dam. Mr. Jubanashwa Mishra in 2013 embarked upon an experiential journey of 28 jobs in the 28 states of India to rediscover himself. This journey entailed traveling 25,000 kilometers, and he explored a long list of jobs inclusive of a mountain cleaner, TRP analyst, tattoo artist, rafting trainee, and a cremation assistant. Isn't that a great feat, and shouldn't we have a huge round of applause for that? This has resulted in his book, 28 Jobs, 28 Weeks, 28 States, which was published in 2016. Jubanashwa Mishra has been serving as the director of Paperboat Labs since 2017. This session has a good 30 minutes and the last 5 minutes devoted to the queries from the audience. So, Hi, it's me again. thank you, Kaveri ma'am. Yeah. So I'd like to start with you, Jubanashwa. What does it mean? It's a character from Mahabharata. Oh. Sorry. He's the father of Rishi Mandhata. Acha. So, and easily you can connect the protagonist of Devdutt Patnaik's debut novel, The Pregnant King. That is Jubanashwa. So, rightly named? Huh? Are you rightly named? I don't know. I mean, how can I be a pregnant king? What, 28 jobs Yeah. in 28 weeks in 28 states? What made you undertake this adventure? See, I'm an engineering graduate in 2006, and during the time of 2002, like 2002-3, it was a time anyone and everyone who had a computer degree had a dream to go to USA and settle down. So, and I'm from Sonpur. It's a very small town in Odisha, and my mother's question was, when I completed my engineering and I was working in TCS, as a software engineer, my mother asked me, three houses left to our house and 4 houses right to our house. One from every house is a software engineer. So my mother asked me, you are a topper, right? And then I said, yes. So are you happy? What are you doing? Then there was a question triggered that time. Actually, is that the only profession left? Like, it's kind of a stereotypical profession, engineering. So then, from that day, actually, that question it's very, sorry to stop you, but it's Yeah. very unusual that your mother asked that question because Yeah, see, one hears of parental pressure to Yeah. make you an engineer or a doctor. Wonderful mom that you have. Yeah, thank you. So from that time, actually, I had that question in my mind till this 28 jobs idea came into my mind. And in 2013, actually, I did that exploration. And actually, in USA and Canada, there is a guy called Sean Aiken. He has done this 1-week job project. And he has done 52 jobs in 52 weeks around Canada and USA. So his idea is to spread the message, discover your passion. So the same question what I thought of 5-6 years back, I realized that this is actually real issues, like everyone should go for what actually someone really wanted to do. So so spreading the message, discover your passion. In India, I started this journey, 28 jobs, 28 weeks, and 28 states. So have you discovered your passion? Yeah, actually, see, I'm a person who always crave for creativity, and so I'm happy right now what I am doing. So it's like Which that. is? No, right now I have my own gaming startup, and so we are so it's like the same creativity actually I found. I mean, post this exploration. Right. Anil, you are, you're part of this Youth Tinker Labs, and you mentor so many young kids, and I've been watching those videos with school kids especially. Quite remarkable. What drew you to this? I mean, why did you decide to do this rather than, get a nice, safe job somewhere,
rise up in the corporate ladder? Why this? So I was born in a place, the name of the place is Balis Moja, which is near Katak. So it is basically formed by two deltas, and this is a group of island, you can call this island, of 42 villages. I was born there. My father was a head constable in CRPF. He got transferred from Bhubaneswar to Bhopal, so I also went with him. I did my education, 12th education, and when I came back to my village, I saw the education system was still the same. Nothing has changed. And when I was into engineering, I was into one of the good engineering colleges in Odisha, which is Burla Engineering College, which is now known as VSSUT. And during this phase of my life, I understood nothing has changed much, and somebody has to start. So I thought of, why not I do it? If I won't do, who will? So I went back to my village and started a small school with a tin shed. I got few of the scholarship. We were the first team from India to launch a sounding rocket. And we are in the Limca book as well when we were in the college. So I thought of, if we are the first one to do this, then if we provide platform to other students, why can't they? And in 2015, I started with my friend Vaishali. She was my batchmate, to be wife in next 1 month. So this is how we started from one village. We started with just 3 students, and now we have impacted more than life of 150,000 students. The best part is, when in 2015 I thought, I told her we'll do this, I won't go for jobs. And like every average Indian mom and dad, my mom and dad told, pagal ho gaya hai. And by the way, I got 3 good placements in core branches. I was doing my civil engineering in Burla. Like, क्या करेगा, पागल हो गया है, 1 साल ऐसे करेगा, बाद में फिर वापस आ जाएगा. That was the thought process. सबका ऐसी thought process था. And I believe that there is a lot of potential in Odisha's grassroots. हर गांव का बच्चा जो आज बैठा है ओडिशा के गांव में, उसमें पोटेंशियल है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, एंड वी वुड बी द वन हु विल गो एंड गिव द प्लेटफॉर्म. और 15, 16, 17 तक लोगों को लगता था बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, होना कुछ नहीं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा चलता है. बट नाउ आई कैन प्राउडली से कि मेरे जो बच्चे हैं, जो एलुमिनस हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, वैसे एलुमिनस आपको कहीं से नहीं मिलेंगे. क्यों? ये बच्चे पूरे ग्रासरूट में थे. नासा की अंडर 19 टीम इंडिया से निकली, 10 बच्चे मेरे ही थे जिन्होंने टीम बनाई. वर्ल्ड रैंक 3. ना जर्मनी, ना तो कोई यूरोपियन कंट्री, ना जापान, ऐसे कंट्रीज़ को डिफीट किया. और उसमें से 4 बच्चे रूरल उड़ीसा से थे. कोई बच्चा वेल्डिंग शॉप में था, someone is there working in as a cycle repair shop में कोई काम कर रहा है एज ए लेबरर. तो ऐसे बच्चे थे. आज एज ए टीचर आई फील प्राउड कि मेरे बच्चे आज इंटेल से फंडिंग पा रहे हैं, दे आर डूइंग स्टार्टअप्स. जो चीज़ हम देखना चाहते थे आज वो मैं देख पा रहा हूँ. एंड दैट इज़ वाई आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, व्हेन आई कनेक्ट दोज डॉट्स, बहुत सही काम किया मैंने. थैंक यू. What do your parents say now? अभी भी पागल बोलते हैं? अभी भी बोलते हैं पागल है, और बोलते हैं कि पागल था इसलिए ये सब हो रहा है. आपको कोई मिले जिन्होंने आपको पागल बोला? बहुत लोग बोले हैं. Even during the journey also, actually, whenever I say that like I'm doing this 28 jobs, 28 weeks, and into all the 20 states of India, few things it's a marketing gimmick, few things ये तो पागल है. So, and then the very interesting thing is, there is a guy called Rahul Narvekar. He was the CEO of NDTV Ethnic Division that time. And in 2013, when I said I want to do this exploration, he asked me a very beautiful question. दादर के नीचे तू नींबू पानी बेच सकता है ना? मैं बोला he understood the whole concept of actually 1 week job project. And actually to kill that inner ego. I mean, whenever we do some kind of corporate jobs and all, we unintentionally, unconsciously, we had some kind of like inner ego developed. So, and that's the reason only, actually, I have done a lot of menial jobs also in this journey.
and like as a cremation assistant in Varanasi also, and in tea factory also I had worked, and a few jobs actually I could not join. I mean, they didn't allow me to work there. Like I had a dream to like work in a gone house in Nagaland. Even in Crocodile Bank, Chennai, I wanted to work, but I could not work. Why? What happened? So they didn't allow. They said it's very in short notice. We can't allow kind of thing, and so that's the reason I was jobless in Chennai. It's a very coincidental thing that I had started my career in Chennai as a software engineer, but I didn't have any job in Chennai, and finally I was like selling sundal, I mean peanuts in Marina Beach, Chennai. So that's how this is the whole story. How much did you make when you were selling peanuts on Marina Beach? Very less. How much? Very less. I mean, like there was a guy, a small kid, probably around in 12 to 13 years old. So I was like assisting him. So the You were story, assisting the yeah, it's a very interesting story. You just please read the book. No, You'll you find- tell me about it then. So Then we'll go and buy the book. it's that time actually sometimes 500. I mean sometimes it's 1,000 also. Really? Yeah, this range. So, I mean, you can make. No, it's not profit, right? It's just selling. Acha. Why you have to? The that peanuts the- cost. No, this is we have to sell. See, like almost like 100. If you sell daily to 100 people, Right. then also it will be somewhere how much someone can buy, like 10 rupees. Right. So it's like 1,000 kind Right. of things. Right. Yeah. So, you don't, either of you miss the idea of going to an office, wearing a tie, becoming a CEO, ordering people around. That's not a dream? First of all, I really believe in one concept: why is important than what. Whenever I did something, I ask, क्यों कर रहा हूँ यार ये चीज़? So when I was in college, दिमाग में यही चलता था, यार लाइफ में क्या करना है? दूसरों को देखता तो लगता है कि यार ये प्लेसमेंट में बैठा है, he wants to do this, ये करना चाहता है, and I have a big ambition, ये करना है यार मेरे को. तो मैं जब बच्चों से बात करता था तो वहाँ से वो लोग बोलते थे, अनिल क्यों करना है तेरे को ये चीज़? तो मेरे बोलता था यार ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? उनका कंसेप्ट डिफरेंट होता था. अरे रहने दे यार, मैं आराम से बैठ जाता हूँ, कोई और कर लेगा. हाँ, बिल्कुल. तो मैंने वहाँ से ये चीज़ समझा है कि यार समवन हैज़ टू स्टार्ट, और यदि आप स्टार्ट अभी से नहीं करोगे तो कल तक इसके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. जी. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 3 बच्चों से शुरू किया था. 3 बच्चों से जब शुरू करते थे तो लोग जाते थे हंस के चले जाते थे, क्या साहब क्या एकेडमी बनाओगे, क्या फाउंडेशन बनाओगे, 3 ही बच्चे हैं, क्या कहाँ ले जाओगे इनको? तो आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो देखो कहाँ ले गए, और ये हमको कहाँ ले जा रहे हैं. तो ये आपने अच्छी बात बोली, ये हमको कहाँ ले जा रहे हैं, मतलब दैट इज द पे. एग्जैक्टली आज जब ये बच्चे जाते हैं तो बोलते हैं यार मैं यंग टिंकर से हूँ, बिल्कुल. तो दे प्राउडली से कि यार मैं यंग टिंकर से निकला हूँ, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ. हम नहीं कहते कि देखो ये बच्चे, हम अपने बच्चों के बारे में कम ब्रांडिंग करते हैं. वो जहाँ जाते तो बोलते हैं देखो यार इस जगह से मैं निकला और मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला एंड नाउ आई एम हियर एंड दिस. और ये स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, मैं खुद भी नहीं जानता था कि लाइफ में ऐसा मौका आएगा कि इस प्रकार के बच्चे हम बनाएंगे और वो फिर हमको गिव बैक करेंगे. और बहुत पॉजिटिव, अब इतने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं. पहले जब हम ग्रो करते थे तो हर मंथली हम नेक्स्ट 500 बच्चों तक पहुंच पाते थे. वो अब और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ पे हम 1500 2000 बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ऑफ माउथ. ये बच्चे जाते हैं दूसरी जगह में, जहाँ पे जाके ये स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं हमने ऐसा ऐसा किया था और हम यहाँ पे हैं. So they become your Ambassadors. Right. वी डोंट पे देम. यंग टिंकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने Paid बनाया, advertising. तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग के लिए पे नहीं करते हैं. वी डोंट हायर शाहरुख खान. और हमारे एम्बेसडर खुद बोलते हैं कि मैंने क्या करके दिखाया. Right. तो बड़ा मज़ा आता है इसको, जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको करने में बड़ा मज़ा आता है. टाई पहनने से तो अच्छा है. जी. मैं नॉर्मली एक शर्ट पहनता हूँ. आपने बुलाया तो थोड़ा सा शर्ट पहन के आना बनता है. Thank you. कोई सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज? Young people especially, because I think all of us when we are young we have such
straight jacketed dreams कि हम यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. So I think these guys are offering an option that, you know, perhaps nobody knew. Yeah, quickly. He's asking what exactly. Can you explain what you exactly do with the young people? That's the question, right? Yeah. तो हमारी जो करिकुलम होती है, हम लोगों ने कुछ हैंड्स ऑन करिकुलम को डेवलप किया है, विच इज़ कम्प्लीटली हैंड्स ऑन, लेस ऑफ थ्योरी एंड मोर ऑफ प्रैक्टिकल. देयर इज थ्योरी बट लेस ऑफ थ्योरी एंड मोर ऑफ प्रैक्टिकल. We go through entire journey from tinkering to entrepreneur stage. We start with students. सबसे पहले हम उनको tinkering सिखाते हैं. सबसे biggest problem with today's student is they don't do tinkering. सिर्फ बुक्स में पढ़े रहते हैं. अरे थोड़ा निकल के इसको करेंगे तो क्या होगा, उसको करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा इसको करते हैं, थोड़ा उसको करके देखते हैं. जैसे कि आपने किया जॉब्स के साथ, थोड़ा ये करके देखता हूँ. तो सबसे पहला फेज होता है टिंकरिंग फेज. सेकेंड फेज होता है मेकर फेज, जहाँ पे मैं अभी टिंकरिंग करना जानता हूँ, मैं कुछ बनाना सीखूंगा. दैट बिकम्स मेकर फेज. नाउ यू गो टू इनोवेटर फेज. मैंने कुछ बनाया है, अब मैं कुछ यूजफुल बनाऊंगा, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, सो आई इनोवेट. तो ये आपका इनोवेटर फेज हो गया. नाउ आई हैव ए प्रोडक्ट और ए सर्विस इन माई हैंड जो कुछ नया है, इनोवेटिव है. आई वॉन्ट टू टेक इट टू मासेस. अब मैं सेल सीखूंगा और मैं इसको सेल करूंगा और लास्ट में बन जाऊंगा एंटरप्रेन्योर. 100 बच्चे जी टिंकर बनते हैं, 4 से 5 बच्चे आपके एंटरप्रेन्योर बनेंगे. ये वो बच्चे होंगे जो पूरे कोर ऑफ द कोर बच्चे होंगे और दूसरों को फिर कल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे. जो टिंकर होंगे भले वो जॉब करेंगे, अच्छा जॉब करेंगे और उस कंपनी में टिंकरिंग करके बहुत आगे बढ़ेंगे. सो ये कंप्लीट फेज है एंड वी आर प्राउड टू से कि विद इन दीज डेज हम लोगों ने 13 स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स, स्कूल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को बनाया है, विच आर नॉट फंडेड ओनली इन इंडिया बट बाहर से भी उनको फंडिंग मिल रही है. मुझे लगता है ये जरूर शार्क टैंक के जज बन जाएंगे बहुत जल्दी. What do you think? Season 2. मेरे बच्चे ज़रूर बन जाएंगे, मेरा तो पता नहीं. Right. I think we'll have to end this session here. Otherwise, we're going to run terribly over time. Thank you very much. They're available here. You can ask them any questions. So this session exactly echoed the fact that winners don't do different things, they just do the things differently. Am I right or am I right? To present the mementos, I would request Lakshmi Menon ma'am to please be there on the stage. Ma'am, please. She has been doing the honors all the time. Audience, can we have a huge round of applause? Kaveri ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sirs. Rolling into the next session, Odia literature and cinema had always been synonymous since the early days of Odia filmmaking. So much so that Odia literature was the only mainstay of Odia cinema, giving us classics like Ka, Nirabo Jhada, Sala Budhar Bodala, Kaliro Atito, Seso Sravana, Chilika Tire, Maguniro Sagada. But are our contemporary Odia movies a reflection of the same of our Odia literary tradition? To have this debate, we have with us titled show, Odia Cinema and Literature, Will the Twain Ever Cross Paths? We have with us Prashant Nanda, director and actor and politician, Suryadeo, film historian. We do not need any introduction, Sabyasachi Mishra, actor, Himanshu Sekhar Khatua, director, and Sanjay Patnaik, director. Veteran actor Prashant Nanda wears many hats. Apart from acting in several award-winning Odia films, he is a director, film writer, and even a music director and a playback singer. Film historian and critic Surya Deo has individually preserved the legacy of the 8-decade Odia film industry through his writings and literary works. Recently, he had been honored at the National Film Awards for Best Writing on Cinema, Kaliro Cinema. Counted as one of the leading actors of the Odia film industry, Sabyasachi Mishra has also worked in Tamil, Telugu, and Bengali film industries. Beginning his career with Pagala Premi in 2007, he has also been ahead
during the COVID times, getting him a different personality altogether apart from just being an actor. Himanshu Shekhar Khatua is the director of Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata. Mr. Khatua directed his first film, Kathantara, which went on to win the National Award for Best Regional Film, Odia. Sanjay Patnaik is a social development professional, and his first full-fledged book in English has been entitled Of Reels, Romances, Retakes, Images, Identities, and Stereotypes in Odia Cinema. May I request Sanjay Deo sir to please moderate the session. The session has been dedicated a good 30 minutes and will reserve the last 5 minutes for questions from the audience. So, please. Himanshu sir would be joining us very shortly. नमस्कार शुभ अपराह्न जेहेतु ओडिया सिनेमार कथा एणु भावुची जे ओडिया रे कथा हे बेटर हम ओडिया रे कथा हे भल हम अंतत ओडिया सिनेमा ओडिया अस्मितार गोटे जुगलबंदी हम और जो कथा को नहीं आम आसीचु ओडिया सिनेमा और ओडिया साहित्यर जुगलबंदी प्रथम कही रखे जी मु जानी प्रशांत भाई तो बेटर कहीपर ताठू ओडिया सिनेमा बा सिनेमा एवं साहित्य दुईटी भिन्न भिन्न माध्यम गोटे माध्यमर आउ गोटे माध्यम सह संपर्क बहुत क्षीण प्रथम कथा हूँ जे साहित्य हूँ अक्षर माध्यम से कल्पना थाए दृश्य को भाविबा हुए एवं सिनेमा हूँ दृश्य और श्राव्यर माध्यम जहाँ निर्देशक देखाए कैमेरा लेंस आपने देखती से दृष्टि जो आम प्रथम ओडिया सिनेमा आरंभ कले 1936 मसीहा एप्रिल 28 तारिख सीता बहर एपर्यंत 86 मसीहार यात्रा भितर 86 वर्षर यात्रा भितर ओडिया साहित्य और सिनेमार संयोगीकरण तीनोटी धारा रही प्रथमतः हूँ पौराणिक पुराण जहाँ द्वितीयतः हूँ नाटक तृतीयतः हूँ गल्प उपन्यास और यहाँ सह किछि कथित साहित्य बा जहाँ को आम ओराल लिटरेचर कहू तार संयोगीकरण होती कहबार द्विधा नहीं जे आम सब प्रसाद भाईना अच्छा ये प्रसाद भाई प्रथम चलचित्र दस्यु रत्नाकर पुराण साहित्य आसला जो थोड़ा से बेसी ना कले नुआ बो ता बंगिया साहित्य आसला निर्देशित प्रथम चलचित्र शेष श्रावण भी आसला बसंत महापात्र नाटक आम जो तीनोटी धारा को बांटिबा तो 60 दशक पर्यंत 70 दशक पर्यंत ये धारा तो आरंभ है सामाजिक सिनेमार 1958 मसीहार माँ ज्ञानेन्द्र वर्मा माँ चलचित्र को नीति पालित कले ही प्रथम करी ओडिया साहित्य और सामाजिक साहित्य और सिनेमार जुगलबंदी कह जाए यही भितर जिते पर्याय आसी ओडिया सिनेमा और साहित्यर धारा केमिति बदली केमिति मोड़ नहीं समांतराल चलचित्र जहाँ बेसी बेसी साहित्य को आश्रा करी तार मोड़ केमिति बदली से संपर्क में मो प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्रारंभिक मंतव्य रखा चाहिए आरंभ करी यही संपर्क में प्रथम मंतव्य हिमांशु खटुआ ठारू हेलो नमस्कार चलचित्र आउ साहित्य दीटा जाक क्रिएटिव आर्ट तेणुकरी मूलरू आम देखा जदि आर्ट माने लिटरेचर जर्नीटा बहुत पुराना आम सेंचुरी धरिकी आमर लिटरेचर अच्छी 18th 19th सेंचुरी लिटरेचर बेस लोकों भितर आदृत थिला एवं लिटरेचर को समस्ते गोटे माध्यम भाव में ग्रहण करुले एंटरटेनमेंट माध्यम भाव में परवर्ती समय रे सिनेमा आसला बेलू लिटरेचर ता जगह माड़ी बसी एवं सिनेमा 127 वर्षर आर्ट फॉर्म लेट्रे आसी किंतु सिनेमार जर्नी आउ गोटे प्रकार आम जदि सिंटैक्स आउ सेमियोलॉजी कथा भाविबा सिनेमा और लिटरेचर रो अलग अलग लिटरेचर को पाथय करके सिनेमा आगू को जाइए सिनेमा गोटे कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म लिटरेचर गोटे इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म लिटरेचर जड़े राइटर गोटे पेन धरी गोटे खाता धरी से लिटरेचर
लिखिपारे किंतु सिनेमा करिया हेले आपण बहुत आर्टिस्ट आदि इनवॉल्व था केवल डायरेक्टर नुहे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को छाड़िले ता भितर आपणकर क्रिएटिव टीम रे गोटे सिनेमाटोग्राफर थाए गोटे ऑडियोग्राफर थाए एडिटर थाए म्यूजिक थाए अन्य थाए तेणुकरी सिनेमा गोटे सिंथेसिस ऑफ अदर आर्ट फॉर्म्स केवल लिटरेचर नुहे नाचरू नहीं सिनेमा सिनेमा थिएटर नहीं विभिन्न जगार सिनेमा नहीं किंतु आम ओडिया सिनेमार इतिहास देखा गले जहाँ कहले जे सीता विवाह ता परवर्ती समय जाए आमे बेसिकली लिटरेचर को आधार करके करूथलु सेठी दीटा क्रिएटर को देखा मिले सब बेले गोटे हूँ जे लिटरेचर जे लेखक लिखती आउ जे फिल्म मेकर फिल्म डायरेक्टर जो सिनेमा को डायरेक्ट करती तेणुक दी जनकर आभिमुख्य गोटे हवा दरकार जिते आम सिनेमार जर्नी आरंभ हुए से आम कौन करूँ ना आम कहू जे लिटरेचर को आम पाथय करूँ से समय डायरेक्टर को बेसी रिसर्च करिया पड़ेनी रिसर्च करिया पड़े क्या उपरे ना से राइटर रो जो कंटेंट अच्छी तेणुक राइटर गोटे विजन थाए राइटर गोटे जर्नी थाए राइटर आम जो गोटे लिटरेरी पीस देखु आखि आगे से आम मुंडरे गोटे इमेजेस गोटे नारेटिव चले लिटरेचर रो गोटे नारेटिव आमर इमाजिनेशन चले किंतु सिनेमा आम आगे ताकू आनिकी थोई थाए सेटा होची डायरेक्टर परसेप्शन जमी समस्तंकर गोटे गोटे परसेप्शन अलग गोटे लिटरेरी पीस पढ़ला बेले आपण मैंने जमी परसीव करियो आउ जने अन्य भाव में परसीव करियो आउ जने डायरेक्टर ता हिसाब से परसीव कर सारा पर से जहाँ को देखो से तार कंक्रीट रूप आम देखू तेणुक सिनेमा सब बड़े गोटे कंक्रीट रु आब्स्ट्राक्ट आड़ को नहीं जाए लिटरेचर सब बड़े आपण को गोटे आब्स्ट्राक्ट रु ना हाँ आब्स्ट्राक्ट रु आप ना कंक्रीट रु आब्स्ट्राक्ट आड़ को आप जाते कहीं आप इमाजिनेशन से एक्टिव हो जाए किंतु सपोज आपन को मुझे गोटे आपन गोटे गोलाप फूल कथा कहि जड़े लिखला गोटे गोलाप फूल को किए कौ हिसाब से भाव किए देखो तार बड़ पाकुड़ा है कि किए भाव कड़ीटे किए भाव अन्य हिसाब से सी जो स्क्रीन को आसे से आम से गोलाप जोटा डायरेक्टर चिंता कर जोटा को देखेब सेटा को आम देखी था तेणुक एठी सब गोटे सिग्निफाएड व्यवधानटा कमी जाए सिनेमा रे किंतु लिटरेचर रे सेटा बढ़िक थाए तेणुक आम जिते ओडिया सिनेमा आरंभ है जहाँ कहते सीता विवाह अमड़ा बाट अदिन मेघ का अनेक चलचित्र आधार करिछि आमर साहित्य को साहित्य सब जोगेची खोराक सिनेमा पाई एवं ता परवर्ती समय से जो सिनेमा होती लोकों पाखु आछि किंतु वर्तमान जे जो प्रश्न होती उठी आम मनरे जे 90 दशक जाए प्राय ओडिया चलचित्र डिपेंड करथिला आमर लिटरेचर उपरे तापर कुआडे गला तार विभिन्न कारण थाई पारे तेरे से प्रश्न को पर कि जहाँ कह जाए सिनेमा पाई साहित्य ना साहित्य पाई सिनेमा साहित्य सिनेमा हुए ना सिनेमा साहित्य हुए ये प्रश्नटी एपर्यंत असमाहित होती जदि आम देखा जब पर्याय को जावा तो ओडिया सिनेमार आरंभ पर्यायर प्रथम आपंकर सीता विवाह तापर श्री जगन्नाथ तापर ललिता ललिता श्री जगन्नाथ पर्यंत तीन याक माइथोलॉजिकल फिल्म तापर जहाँ आसला आप माँ है 1958 रे तापर पुणी आसला महालक्ष्मी पूजा तापर दस्यु रत्नाकर तापर आपको नुआ बो तापर अमड़ा बाट मला जन्म 60 दशक पर्यंत 60 दशक शेष पर्यंत ओडिया साहित्यर बहुत बेसी प्रभाव थिला सेटा बाबूलाल दोषी बेसी आनी कहबार असुविधा नहीं बाबूलाल दोषी ही अमड़ा बाट अभिनेत्री माटीर मनीष अदिन मेघ ये सब आड़ जो प्रवाहटी शेष आरंभ कले कि से प्रवाह जिते आहरी क्षीणतर है 60 दशक पर क्षीणतर है से अधिकांश चलचित्र चलला ना अधिकांश चलचित्र को ग्रहण कले ना उदाहरण नहीं जापे अपरिचित को ग्रहण कले ना एवं माटीर मनीष तो हुए तो क्लासिक हो पारे से फिल्म निश्चित भाव क्लासिक फिल्म तार व्यावसायिक सफलता शुणुला जो कथा कहुए ओडिया साहित्य ऋण करिकी ओडिया सिनेमा को परिपूर्ण कर ऋण सुझा जाए ना संजय पट्टनायक आप इस पर कौन कहे
बंधुगण मु भावुची जे जितेबले टॉपिक टी डिसाइड हो इंडियन एक्सप्रेस जो माने कर्मकर्ता को तैयारी करथिबे डेफिनेटली दी चारोटी प्रिजम्पशन मन भीतर को आसी गोटे हूँ जे जो कि आम भावुचु जे इफ दैट वन लिटरेचर और सिनेमा कैन मीट अगेन ता माने हूँ या जे अतीत जो भली भाव आमर साहित्य आमर चलचित्र को इन्फ्लुएंस करछि बा ता द्वारा सिनेमा बेनिफिटेड होइछि एबे हेई पारिबो कि द्वितीय जिनस होउछि जे आ गोटे प्रिजम्पशन होउछि जे वर्तमान जहाँ अवस्था ओडिया चलचित्र कंटेंट को लेकरी वेदर लिटरेचर कैन फिल इन दैट गैप नंबर 3 होउछि जे आजिकार जो साहित्य बा लिटरेचर आम तैयारी करुचु ताहा 60-70-80 वर्ष तले जो इतिहास बा जो साहित्य सृष्टि करूँ जहाद्वारा सिनेमा अनुप्राणित होता ताकू एड्रेस करि पारिबो कि एवं चतुर्थ होउची जे वेदर एट दिस पॉइंट इन टाइम अ पार्टनरशिप इज पॉसिबल और नॉट गोटे जिनस आम ये देखा मुख्यतः मु राजी जहाँ सूर्यबाबू कहले जे जो माने से समय चलचित्र करुले चलचित्र करने को आगे आसते से माने साहित्यरू बा लिटरेचर कहीं गप नहीं सिनेमा कले सो लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन दिस प्रथम कथा हूँ जदि आपण आउ 3 वर्ष गले माटीर मनीष 100 वर्ष पूर्ति हम 1925 मसीह माटीर मनीष लिखा होता मलाजन 1928 मसीह लिखा होता पाखापाखि 100 वर्ष हो गला आज पर्यंत बरजू आ सती चरित्र भाया चरित्र आम बोधे ओडिया चलचित्र रे भी देखी पारिनु कहीं तार माने कौन तार माने जदि आप टिके पछकू फेरीजे 1936 बा 1947 मसीह जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी आमको मिला से समय लिटरेचर गोटे मेजर भूमिका थिला नोइंगली और अनोइंगली जे गोटे नुआ ओडिया आइडेंटिटी आमर सृष्टि करिवो गोटे ऑथेंटिक ओडिया सृष्टि करिवो कहीं ना आम विभिन्न जगार थिलु आम सढ़ाई कलारे थिलु आम मेदिनीपुर थिलु आम इे आसिकी सीमांचलम रे भी थिलु तो मिसीगला गोटे पॉलिटिकल आइडेंटिटी सिना क्रिएट कर दिया गला बिकॉज वी बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बी कार्व्ड आउट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस सो गोटे लाइन गोटे स्टेट तैयारी कर दिया गला किंतु लिटरेचर गोटे सबुठु बड़ भूमिका से समय थिला जे सेटा गोटे आइडेंटिटी गोटे ओडिया आइडेंटिटी सृष्टि करथिला नोइंगली और अनोइंगली हे तो लिटरेचर जो लिखा है 1925 मसीह कालिंदी पाणिग्राही जो लिखिले माटी मनुष्य सी भाविकी लिखि नथिले किंतु परवर्ती समय सेटा से रोल प्ले कला एवं धीरे धीरे जदि आप देखिए समय कम अच्छे तेणु बेसी बखाणीबी आपण मैंने सब जानी ता भीतर जदि आप देखिए कौन है ना सिनेमा जो मैंने करने को गले से मैंने देखिले जे यही चरित्र गुड़िक यही जहाँ को कहूँ आम यही साहित्य आमर घरे घरे आदृत हो जाइए आम घर भितर समस्ते जानी माटीर मनीष कौन का कौन तुंडबाईद कौन समस्ते जानी तेणु सबुठु बड़ इश्यू थिला जे जो सिनेमा कैपिटलाइज कला जो गेनटा आमको लिटरेचर देइथिला जो चलचित्र निर्देशक और प्रयोजक मैंने भाविले जे समस्ते तो जानी से पेशादार रंगमंच जरिया ये साहित्य आम पाखु आसिकी पहुँची तेणु कहीं वाई नॉट टेक दैट सो सेटा गोटे गोटे मेजर मोटिवेशन थिला आमर सृष्टि करने आमर चलचित्र साहित्य को चलचित्र को आसवाई गोटे व्यावसायिक चिंताधारा मध्य थिला लेट्स नॉट फॉरगेट दैट आ गोटे जिनस थिला जदि आपण माने देखिबे मत कहीदेवे के समय कहीपर आउ गोटे कथा जदि आप देखिए से समय कथा स्वाधीनता पर कथा जदि आप देखिए आमर गोटे नुआ ओडिशा तैयारी हला नुआ राजधानी तैयारी हला ऑल इंडिया रेडियो आम पाखु आसला सामान समय हाईकोर्ट तैयारी हला आम नुआ ओडिशा बढ़ी चलिलु ता सहित गोटे नॉन एग्रीरियन मिडिल क्लास मध्य आम तैयारी कलु से मिडिल क्लास यही लिटरेचर को ये लिटरेचर वैल्यूज जोड़ा आम कहूँ फर्स्ट जनरेशन चैलेंजेस माने जॉइंट फैमिली अनटचेबिलिटी रूरल अर्बन डिवाइड ट्रेडिशन मॉडर्निटी डिस्पोजिट पेजेंट्री ये सबू जिनस गुड़ा को लेकरी से माने तैयारी कले कौन ना तार वैल्यू सिस्टम तैयारी कले तेणु ये लिटरेचर गुड़िक आम रक्त भितर पशिगला तेणु से सुविधा है आपको नहीं कि सिनेमा तैयारी करिबारे
এটা হচ্ছে সবুঠু বড় জিনিস আমি মন ভিতরে রাখা দরকার। আর গোটে জিনিস হচ্ছে যেটা গোটে ইন্টারেস্টিং জিনিস লিটল আউট অফ কন্টেক্সট বট আই মस्ट টেল ইউ, সেটা হচ্ছে যে মধ্যবিত্ত ফিল্ম ইজ এ মিডল ক্লাস আর্ট ফর্ম। কারণ মধ্যবিত্তর সবু লোক মানে সিনেমা তৈরি করুলে, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোক মানে হি সিনেমা দেখা ভীষণ বিরক্ত হোলে। মোর মনে আছে ছুয়াদিনে জস্ট মু কହୁଥିଲି যে গোটে বজারি টকা বলে গোটে ওয়ার্ড यूज होता है। विशेष से मैंने से वार्डटा के यूज करना। बजारी टका किए ना जी सिनेमा देखिए, आम सिनेमा करूँ, आम ये नहीं कि सिनेमा करूँ माने चलचित्र जो साहित्य आम सिनेमा करूँ, किंतु आम सिनेमा देखापी आमर गोटे गोटे टेक्नोलोजी जो ट्रांसफर है गोटे जहाँ कहते आमर माने नाटक बा लेखारू जो आमर गोटे टेक्नोलोजी ट्रांसफर है सिनेमा को सेठू आम डरुलु जोटा गोटे कौन गोटे नुआ जिनसटे आम पाक पलि आसे। तार बहुत नजर अच्छी से समय ना से गुड़ा देवाई। आउ गोटे जिनस जोटा करेन्ट कंटेक्स्ट मुझे भावी निहाती आपण मानक कहवा दरकार। करेक्ट इंटरप्ट करी आप करेक्ट कंटेक्स्ट को पर जा कि जो आप छाड़िले जे मध्यवित्त परिवार जो आसूले लिटरेचर जो सिनेमा को रूपांतरित होता जब आम दुईटा भाग में बांटा ओडिया सिनेमा को 1976 पर्यंत 1976 गोटे कलर आसला रंगीन है 1976 पूर्वर जेतिकी जेतिकी ओडिया साहित्य को नहीं सिनेमा होता एवं से नाटक भी होता माणिक जोड़ी आसला नाटक अमड़ा बाट कि अदिन मेघ का अभिनेत्री कान्धुचरण अधिकांश भाव में छाई कालिंदी पाणिग्राही गोटे होता माटर मनीष। सौभाग्यर कथा हूँ यही भितर जो अदिन मेघ देखा कुंतल कुमारी आचार्य से भाईना भी थे माटर मनीष ही भाईना थे। भाईना जो आरंभ कले प्रोफेशनल फिल्म जर्नी मैंने जो आरंभ कले सिनेमार निजे निजे आगभर होकर भरोसा न करी निज उपर भरोसा कला आरंभ कले। ममता ममतार कहानी भी किसी किसी लक्ष्मीकांत महापात्र बुढ़ा शोकर किसी किसी इन्स्पायर्ड होता एडप्शन होता से शेष श्रावण कले। शेष श्रावण भी बसंत महापात्र को नाटक थिला एवं से पर्यंत आम जो देखा तेल अधिकांश गोटे नारी मनस्तत्व को लेकिन सबतक जी नोवेल होती किंतु तापर शेष श्रावण पर भाईना ओडिया साहित्य को नहीं ओडिया सिनेमा कले ना कहीं भाईना गोटे खाली गोटे छोट जिनसटे कहीदे छाड़ दूँ ये जिन गोटे जिनसटा अन्य स्टेट्र गोटे उदाहरण दे करुँची जे दुईटा जिनस गोटे हूँ जे यही प्रश्न को मु गोटे डेटा आपण मानक देवाई चाहूँगी जे 1980 मसीहा पर जोटा कि सूर्यबाबू बर्तमान कहले जे 80-90 दशंधि पर चलचित्र आमर कौन थिला जे चलचित्र आम समाज को प्रतिफलित करुला किंतु परवर्ती समय प्रतिफलित कलानी तार विभिन्न कारण अच्छी। दुईटा इंपोर्टेंट कारण करेन्ट कंटेक्स्ट हूँ जे आप 2011 सेंसस को देखिए से कौन होती केवल ओडिया नुह सबू भाषा गुड़िक देखिए जब परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीकिंग ए वर्नाकुलर लैंग्वेज हैज रिड्यूस्ड जो जगार निज भाषा लोक कहे से तार साहित्य को पढ़े ना नंबर 1। नंबर 2 हूँ लिटरेचरटा को मुख्यतः गोटे प्रिंटेड आर्ट फॉर्म हिसाब से देखा जाए प्लेज नॉवेल्स पोएट्री आजिकली से प्रिंटेड फॉर्मटा को डिजिटल रिप्लेस कर सारा तेणु केते दूर आम लिटरेचर क्रिएट करूँ और लिटरेचर आम सिनेमा को इन्फ्लुएंस कर दैट्स अ बिग क्वेश्चन। थैंक यू। मु बर्तमान से प्रश्न को आसूँ 76 मसीहा पूर्व जो आप सिनेमा सह इनवल्व थे नुआ बो हो दस्यु रत्नाकर हो अदिन मेघ हो कि माटर मनीष हो ये सब पौराणिक साहित्य आसला सामाजिक साहित्य आसला आपन जो आरंभ कले ममता आरंभ कले लक्ष्मीकांत महापात्र बुढ़ा शंकर छाया एडप्शन को लेकिन किसी आज्ञा आज्ञा से जहाँ हो शेष श्रावण कले शेष श्रावण हूँ ओडिया साहित्य नाटक तापर आपण साहित्य नहीं सिनेमा कले ना कहीं आपण मतरे साहित्य और सिनेमा भितर विभेदी कौन और साहित्य सिनेमा कला बेले कौन कौन सब प्रतिबंधक और बाधा रही भावती। तो प्रश्न शुणला लगुव जो बहुत सहज प्रश्नटा किंतु उत्तर पे से समय मो पाखे ना आपण मान पाखे ना मु आम कहीं पाइबा भी ना। मूल कथा हूँ जितेबाला साहित्य कथा कथबार्ता करुचे आ चलचित्र विषय कथबार्ता करुचे साहित्यर डेफिनेशनटा भी जाना दरकार साहित्य कौन
What is literature? Writings of work of art. सी नोवेल हो पारे, सी सर्ट स्टोरी हो पारे, सी पोएम हो पारे. जदि यही कथा ही तार संज्ञा हुए ताहले कौन सी चलचित्र रे ये तीनिटीर अभाव अच्छी कि जेकोसी चलचित्र नहीं जदि आपण कहते आपण प्रश्न जदि आउ थे करेंगे ना से लिटरेचर कथा आम कहूनु जहाँ जहाँ आगु लेखाई रही लोक जहाँ को पढ़ी आ लोक जहाँ को हृदय को नहीं ताकू धरिक कहीं चलचित्र न करना से प्रश्न हेल्ले मुझे बुझीपारि से प्रश्न अलग प्रश्न. आम फिल्म केमती होता आमर फिल्म मु तो 1959 मसीह फिल्म इंडस्ट्री को गली केते वर्ष बीती गलानी कहले 60 वर्ष रु बेसी हो गलानी मु देखि आसुची मु देखिली जे फिल्म गोटिया होउची तापर 3 वर्ष काल फिल्म आउ होउने पुणी 2 वर्ष रे गोटे फिल्म होउची तापर आउ किछ होउने तापर 4टा फिल्म एका संगे रहला तापर आउ 3 वर्ष पिछ फिल्म होउने. मूल कथा होउची जे चलचित्र जहाँ भी कहले ता पूर्वर सबू यही नोवेल को लेकर करुले जो नोवेल घरे घरे लोक पढ़ी तेणु तापर फिल्म कले लोक मैंने आग्रह सहकार देखिए ये भावना नहीं करी चलचित्र तैयारी है किसी फिल्म बहुत भल चलला किसी फिल्म बिल्कुल चलला नहीं. जो माटीर मनीष कथा आपण मैंने कथबार्ता होती माटीर मनीष को एमती ओडिशा रे जहाँ घरे जी टिके भी पाठ पढ़ी सी माटीर मनीषटा पढ़ी जाए किंतु माटीर मनीष जमारू चलला नहीं. एइथिपई कि जे मु ताकू जेतबेले विश्लेषण करुଥାଏ मझिरे मझिरे मु सेतबेले देखिली जे चलचित्र आउ पूरा संपूर्ण चलचित्र रो गोटे पार्ट होची लिटरेचर. लिटरेचर रो पार्ट फिल्म नुह चलचित्र नुह. एटा जेतबेले मु बुझिली मु कहली ताहले ए जो लिटरेचर रो संज्ञा चलचित्र रे बदलिबा दरकार. कारण जी आज गोटे नुआ कहानी भावुची फिल्म करने कि सी डायरेक्टर हो बा से स्टोरी राइटर हो जितेबाला से बसुंच भावुंट चिंता करते से आखिरे जल जल देखा जाउची जे मोर टार्गेटेड ऑडियंस किए आपको देखिबो किए. जितेबाला टार्गेटेड ऑडियंस आम देखी नौचु मिडिल क्लास फैमिली से मैंने देखिए तेणु तांकर टेस्ट कौन तांको टेस्ट होची अमरावटा फिल्म बही पढ़ी ए बही पढ़ी से बही पढ़ी अमावास्यार जन्म पढ़ी सब पढ़ी ताल अमावास्यार जन्म आम कहीं कलु नहीं. अमावास्यार जन्म प्रत्येक ओडिशार जी पाठ टिके पढ़ी ता हृदय से नोवेल्टी अच्छी किंतु कई फिल्म करना कारण तादेह जो कैरेक्टर अच्छा से आमर मिडिल क्लास फैमिली आइडेंटिफाई कर एक कथा भाविकी आमे चिंता कलु मु चिंता करती मु तो मो विषय कथा कहीपरि अन्य मानकर चिंता कौन थिला एमती बसिकी केवल आलोचना करूँ से सुजोग के मिलनी आगू के मिल भी संभावना ना. तथापि मुझे फिल्म करने को आसली मु कहली जी 3 वर्ष 4 वर्ष भितर गोटे फिल्म कहीं कहूँ गोटे वर्ष कहीं 8-10टा फिल्म न हम ताले कौन हम ना ये फिल्म को आमको गोटे इकोनॉमिक वायबिलिटी दवाक पड़ो. इकोनॉमिक वायबिलिटी माने आमे 5 टंका देकर फिल्म करवा आम फिल्म 5 युक्त आउ गोटे टंका 6 टंका जदि आसला ताहले वायबिलिटी है. ये वायबिलिटी केमती हम ना दर्शक देखिले हम. दर्शक क्या देखिए आमे जो दर्शक मान देखुचु आमे जो दर्शक आसवे बोली जाचु तांकर बोध हुए ए प्रकार कहानी देले से माने ताको ग्रहण करिवे ए प्रकार चरित्र देले ताको से माने आइडेंटिफाई करिवे एमती गीत देले ताको से गुणगुण होकर गाइबे एवं आमर चलचित्र चलो इकोनॉमिक वायबिलिटी आसो. तेणु सेतबेले ए कथा चिंता कला बेले सेमिति कौनसी आखि आगे पड़िला नहीं जी दृश्यमान नोवेल लिखिं. विजुअल लिटरेचर
ऑलमोस्ट आम ओडिशा रे बहुत कम आपण जदि पढ़े जानीपारे फिल्म छाड़त विजुअल लिटरेचर वी वांट विजुअल लिटरेचर देयर वाज नो विजुअल लिटरेचर बंगला देखिली आम तो जाऊँ सब शूटिंग करने को कलिकता दौड़ूल आमर तो ये किसी नाला सेठी पहुँचला बेलू वर्षे तांकर जो पूजा हुए पूजा रे पूजा संख्या तांकर बाहर बही जो मैगजीन बाहर उल्टो रथ अमुक समक ता भितर कम से कम 10-10टा एमती कहानी मिले जे ता पर वर्ष से 10टा कहानी फिल्म हो जाए तेणु टेस्ट ऑफ द पीपल टेस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड डिटरमाइनिंग आइडेंटिफाइंग द टारगेटेड ऑडियंस वाज द मेन पॉइंट जहाँ को धरिकी आमे कहानी बा मु कहानी तैयारी करुली बा कहानी को रचना करुली बा कहानी को मु संग्रह करुली साउंटुली गोटे डिस्कोर्स आसला जे भिजुआल लिटरेचर जहाँ को आम ओडिया दृश्य शब्द साहित्य कहीपर अंततः यह प्रमाणित है जे सिनेमा हूँ दृश्य शब्द साहित्य एवं सिनेमार एक अंश हूँ साहित्य लिखित साहित्य आपण मैंने जानी कि नहीं आम गहन एमती जन अभिनेता भी अच्छा खूब चमत्कार कविता लिखुले मुझे बहुत कविता छापी छोट थिला बेले से धरित्री बहुत कविता लिखुले गप भी लिखुले किंतु अभिनेता हो गले प्रचुर पढ़ती बोली जानी तेबे साहित्य पढ़ला बेले चरित्र को जमी देखा हुए बा चरित्रटे निज मन भर जमी आंकी हुए अभिनय कला बेले साहित्यर से चरित्र को केते दूर बुझिक अभिनय करने को हुए मोर प्रश्न सब्यसाची को धन्यवाद प्रथम समस्त को नमस्कार आज गोटे एमती मंच एमती अतिथि संगे अच्छी जो माने मोर पूज्य जो मान को मु बहुत सम्मान दिए आज से संगे बसिकी मोर किसी फिलिंग्स शेयर करार सुजोग मिली यहाँ बोधे सब बड़ अचिवमेंट मोर आज मु गोटे एमती परिवार को बिलोंग करुँची जो साहित्य को प्रायोरिटी दि जाए आ मुझे एमती गोटे प्रोफेशन रे अच्छी जो सिनेमा कहले मोर आज जीवन पलटि जाइए तो दुईटा जाक जिनस मोपाई बहुत जरूरी आ बहुत निजर जितेबले मुझे स्ट्रेट क्वेश्चन को आसबि ताले सेटा होची अभिनय रे मु केमिति साहित्य को खोजे किंबा मोर अभिनय रे साहित्यर केते प्रभाव थाए मो पाई मोर जो स्क्रिप्ट थाए सेटा मो पाई बाइबल थाए जो स्क्रिप्टा गोटे कोनोसी राइटर रो लेखा गोटे कोनोसी अनुवाद हेतिवा सिनेमार पंक्ति ही थाई पारे किंबा गोटे गीत जोटा मु आज अभिनय करछि से गीतटा भी गोटे लिरिक्स राइटर रो गोटे लेखा ही थाई पारे मु सब बेले तार आत्मा खोजा को चेष्टा करे जे एई स्क्रिप्ट रे कोन लिखाई छै ओ केमिति लिखाई छै मोर जो चरित्र मु सेई चरित्र रु बाहरी करी जो चरित्र मते दिया जाइछि सिनेमा रे अभिनय करिबा पई सेई चरित्र भितरे पसिया पई चेष्टा करे आ सेठी लेखकर आ डायरेक्टर कर दुई जन कर जेमती भाईना कहउतले जे लेखक आ डायरेक्टर कर विजन होछि सिनेमा सेटा को मु मो द्वारा दर्शक पाखरे पहुंचाया पई चेष्टा करे गोटे माध्यम हिसाब रे आ जदि आजिर टॉपिक जोटा आमर सिनेमा और साहित्य विषय में आम जदि कहबी मु अल्परे कहबी कहीं आपण मैंने जानिथिबे सिनेमा लाइन रो लोक माने इमोशनल से माने बहुत अधिका कहती कहीं से माने तांको सिनेमा को साहित्यिक माने मध्य तांको साहित्य को सेति भल पाती आम पाखे समय बहुत कम अच्छी मु बॉडी लैंग्वेज रो बुझी पड़ुची तो मु शॉर्ट रे खाली एतिकी कहया पई चाहिबी जे बही पढ़िबा गोटे एक्सपीरियंस सिनेमा देखिबा मध्य गोटे एक्सपीरियंस किंतु बही गोटे पाठक पाखक आसीबा पई जहा खर्च सिनेमा गोटे पर्दा पाखे आसवाई ताठू बहुत अधिका खर्च थाए और बहुत बड़ रिस्क थाए तो सिनेमा सब बेले सेमिति हुए जोटा को जमी भाईना कहते आम भावु जे दर्शक बोधे या देखापी चाहूँगी आईटा आम केमी जानू आमर पास्ट रेकर्ड रु जितेबाला 2007 रे मु सिनेमा कली मु फिल्म पागल प्रेमी रिलीज है बड़ हिट है मत बहुत भल पाइबा मिलला दर्शक कहला रे सब्यसाची बढ़िया करुच्ची बड़ बड़ फिल्म्स ऑफर्स आसला सेकेंड फिल्म कली एगेन सेटा भी हिट है से सबतक फिल्म कौन ना कौन तेलुगु किंबा अन्य लैंग्वेज फिल्म रिमेक थिला समय गड़ी गड़ी चलला मते भितर आस्ते आस्ते गोटे भोक आसला जे रिमेक तो अनेक कले ओरिजिनल फिल्म हेले केमती होता भाग्य को से मत गोटे फिल्म मिलला बंदे उत्कल जननी फिल्म कली रिलीज है फ्लॉप हो गला मत लगिला बोधे आम इंडस्ट्री जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छा जो बड़ बड़ व्यक्ति जो मान को मु सम्मान दिए से बोधे ठीक कहते बोधे रिमेक छड़ा ओरिजिनल ओडिया रे चलबनी चलला आस्ते आस्ते कोविड आसला कोविड समय
हठात गोटे विराट बड़ परिवर्तन है समस्ते ग्लोबल कंटेंट देखा आरंभ कले समस्ते बुझा आरंभ कले अच्छा आमे जोटा सब्यसाचीर पागल प्रेमी देखते सेटा हूँ आर्या पिक्चर रिमेक सी भी भल करथिला ये भी भल करछि किंतु सेटा बेसी भल थिला कि एटा कम थिला सेतिर अधिक पैसा खर्च होइतला एमति विभिन्न प्रकार कंपैरिजन आसला आउ गोटे इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा मिलला सोशल मीडिया रे जे समस्ते चाहिए जे ओडिया रे कहीं ओडिशा रे भल कंटेंट होनी आउ सबुआड़े से जो गोटे रिवोल्यूशन रो गोटे भोक मते देखा मिलला वर्तमान गोटे खुशीर कथा जे एबे जो 7 मास हेलानी मु जो सिनेमा उपर काम करुच्ची सेटा गोटे ओडिया उपन्यास नादबिंदु उपर आधारित फिल्म ना हूँ पुष्करा मो चरित्र हूँ गोटे स्वर्गद्वार गोटे ब्राह्मण जी कि घरे जदि कहार मृत्यु होगला पुष्कर दोष लगिला सी जाकि पुष्कर दोष छड़ाए आउ लोक मैंने गाँ गहले डाकते ए पुष्करा तो पुष्करा चरित्रटी बर्तमान मुझे करुच्ची जोटा कि नादबिंदु बोली गोटे उपन्यास उपर आधारित आईटा भी एबे गोटे एक्सपेरिमेंट जे जहाँ आमे भावुँ जे बोध हुए दर्शक या चाहूँगी आउ ठीक से ही समय बोधे आम पैनल आम डिस्कसन भी से साहित्य और सिनेमा उपर अच्छी जेहेतु सभी आम साहित्य और सिनेमा पर कथा होचु समय सरी सरी आसुची तो भाईना और हिमांशु को गोटे प्रश्न और तुमको संजय को गोटे प्रश्न हिमांशु को प्रश्न हूँ गोटे धाड़ी उत्तर देवे क्रांतिहार गप को आप चलचित्र कर मतरे क्रांतिहार चलचित्र गप को चलचित्र कला बेले आप कौन सब परिवर्तन करते चलचित्र दयाक संक्षेप कहे शुणु से गोटे तार लेखिका थे इति सामंत तांकर गोटे गल्प सेतबेले थिला झड़ परर सूर्य तार कहानी जोठू अधा सेठू मु सिनेमा आरंभ करी तेणुक सबु बेले हुए कौन ना चलचित्र रे जो कहानी होची कहानी आम कंटेंट ही नहीं था लिटरेचर रु प्राय प्रथम कथा है लिटरेचर को पूरा ट्रांसलेट कले सिनेमा रे सिनेमा हुए तेणुक लिटरेचर हूँ ता जगार सी गोटे बरगछ भाया सेठी ता डाल पाला मेलैकी अच्छी तार पाठक अच्छा से पढ़ुं जितेबाला जड़े फिल्म मेकर लिटरेचर को लेकिन सिनेमा करे सेतेबेले से बरगछटा को आणिकी जदि उठेकरी ता निज मीडियम रे सिनेमा मीडियम रे थईदेव सेटा मरी तेणुक ता देहर गोटे मंजी नवाक पड़ो दैट इज द कंटेंट कंटेंट नहीं कि ताको डेवलप करिया पड़ो से भाव में क्रांतिधारार मु सिनेमा आरंभ करी मझीरू एवं चरित्र मानक स्टडी करी कारण आमको बारंबार रिसर्च करने पड़े एवं फिल्म मेकर और राइटर भितर गोटे प्रश्न उत्तर सब बेले चले तेणुक फिल्म मेकर जाना चाहे जे राइटर आभिमुख्य कौन मुझे बुझा चेष्टा करी वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक थिला मु भावुची बोध हुए जे सारिवाई चारिआडे निर्देश बर्तमान भाईर को से प्रश्न करके सारी भाईर भर श्रावण बा शेष श्रावण को जिते आप चलचित्र कले मूल लेखा जहाँ मूल नाटक जहाँ चलचित्र कला बेले किसी परिवर्तन करते कि यथेष्ट परिवर्तन करा पड़ा एमती कि होल कहानीटा को मत फ्लैशबैक को नहीं जावाक पड़ा तैयारी करा पड़ा मु खाली ये एत सब कथबार्ता भितर सरीगला मु गोटाए प्रश्न खाली छाड़ी दे जाऊँ लिटरेचर बहुत जिनस लिखाई नहीं कहीं फिल्म होनी कहीं हेलानी ता विषय आलोचना चलती 1999 मसीह भीषण भाव में बात्या है तापर तो कई बही लिखि नथिले फिल्म कले कहीं मु देखिली डोंगरिया माने जो मैंने अच्छा नियमगिरी पहाड़ रे से कहते सब हटिकी जाओ एठू खोला हम एठू आलुमिनियम बाहर सी जो कष्ट से कष्ट पे तो बही लेखा नाला मु कहीं कली सी जीवंता भूत कहीं कली तेणु कथा हूँ बेले बेले आम आखि सामने लिटरेचर से कहानी नहीं कि चली आसे एवं से कहानी आम पाखे पहुँची जाए एवं ताकू छाड़ी हुए नहीं जदि छाड़ीदबा आम भावा बुझ आम कर्तव्य किसी भूल कर सभ्य सिनेमा और साहित्य भितर विशेष प्रवृत्ति कौन गोटे लाइन सिनेमा को छाड़िकी हुए तो साहित्य थी पारे किंतु साहित्य को छाड़िकी सिनेमा हो पार ना आमर साहित्य गोटे एमती जिनस जोटा कि आमर भाषा आमर प्रकाश करिवार माध्यम आउ गोटे राइटर जदि लाइन टे न लिखिब गोटे एक्टर मुहरे कथा कहवाई शक्ति न डायलॉग होची गोटे 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 आर्टिस्टर अस्त्र गोटे डायरेक्टर अस्त्र तो गोटे कोरियोग्राफर अस्त्र शब्द नथिले
सिनेमा नहीं तो सेटा होची ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସିନେମାକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ନା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ସିନେମା ସେ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଯିଏ ଜଣେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଲେ ସିନା ସିନେମା କରିବ। ଶେଷତମ ପାହାଚ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ କୁହାଗଲାଣି ଯେ ଜାଗା ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସୋ ବିଫୋର୍ वी वाइंड अप आई जस्ट वांट टू पुट अ स्पैनर। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଋତିକ ଘଟକ ବେଙ୍ଗଲର, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ which I think will sum up everything, that literature has restored Bengali cinema. So ସିଏ କାହିଁକି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାର କାରଣ କ'ଣ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଲିଟରେଚର୍ ଆଉ ସିନେମା ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟସ୍ ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ଉଭୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଏଇ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ସିନେମା ନଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲେ ବି ସିନେମା ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସିନେମା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏଇ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଜୟ ହଉ ବୋଲି କହିବି। ସାରିବ ଏଠି? No, we won't ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ take any ସମୟ questions. ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ won't take any ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାୟ। questions. ତ We won't take any questions, sir, please. ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଆମ ହାତରେ, We are ବହୁତ running ଅଲରେଡ଼ି short of time. ଅଭାବରେ ଅଛୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। Cinema is something related to entertainment. We cannot have much debate on that. Please. No, please. बोधहुए उपस्थित परिस्थिति को देखिले ओडिया सिनेमा उपरे यही वितर्कटा निहाती भावे जरूरी थिला। आमे बहुत किसी शिखिलु, बहुत किसी जानिलु और ओडिया साहित्य और सिनेमार निज निज पक्ष अच्छी आ ओडिया सिनेमा जे हजि जाए नहीं यही जिनस आमको जनइथबा मु सहृदय धन्यवाद जनाऊँगी। नाउ टू गिव अवे द मेमेंटोज, मे आई रिक्वेस्ट to give away the mementos, now may I request Ms. Lakshmi Menon to be there on the stage to give away the mementos to the panelists. Ma'am, please. Can you have a generous round of applause, please, audience? Can you please take a moment for a group photograph? That's fine. Thank you, Susan, ma'am. The next segment of the Odisha Literary Festival 2022 themed My Country, My Kahani is on writing cinema, fact, fiction and fun. The title is self-explanatory because the soup of cinema gets the right taste only with the right concoction of facts, fiction and cinema, and a garnish of fun to shower it with some love. We have with us authors Yatindra Mishra and Anand Vijay for the session. Yatindra Mishra has the latest book on an anthology on the Thumri Queen and Ghazal singer Begum Akhtar titled Akhtari, Saaz aur Saaz Ka Afsana, recipient of many awards for the literary contributions including the Bharatiya Gyanpith Fellowship. His book Lata Surgatha won 6 awards including the prestigious 64th National Film Award for Best Writing on Cinema.
Anand Vijay has been active in journalism for nearly 25 years. He is the author of 11 books. Among these, Prashangvas, Kolahal Kalah Mein, Bollywood Selfie, Loktantra Ki Kasauti, and Marxwad Ka Ardha Satya have been well received. Anand Vijay is currently working with Dainik Jagran as an associate editor. He has been conferred with the National Award for Best Writing on Cinema. May I request Ms. Kaveri Bamzai, the festival coordinator, to moderate the session. The session has a good 30 minutes and the last 5 minutes devoted to the... Okay, we won't be taking any questions. We are running short of time. This session has been dedicated a good 30 minutes, and here you go. Great. Thank you so much, everyone, for joining us. And please do sit down while we conduct this conversation. Actually, आप दोनों तो मित्र हैं, आपको मेरी ज़रूरत है ही नहीं बात करने की, but आप तो एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, but फिर भी मैं कोशिश करती हूँ. यतेंद्र जी, आपने कितनी किताबें लिखी हैं इतनी महान हस्तियों पे, मतलब गिरिजा देवी, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, बेगम अख्तर, और ये सब आपके मतलब आपके एनवायरनमेंट में है, आपके कल्चर में, मतलब ये सब आप सुन के बड़े हुए हैं. इनके बारे में कुछ बताइए कि जब आप इनके ऊपर लिखते हैं तो आपको थोड़ा झिझक महसूस होती है कि मतलब मैं इनके बारे में लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ, ये गुस्सा ना हो जाए, मतलब बेगम अख्तर वगैरह तो है नहीं, बट जैसे लता जी जब थी तो आपको कभी झिझक महसूस होती थी? बहुत धन्यवाद कावेरी जी, आपने यहाँ बुलाया इस सेशन के लिए. ये बहुत सारा ये सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है और हर बार मैं एक जवाब देता हूँ अपनी सफाई. नहीं, बहुत अच्छा है, सफाई भी देता हूँ. लता जी से बात करने की शुरुआत कठिन थी. हाँ. कठिन इस अर्थ में कि जब मैंने उनसे प्रपोज किया कि मैं अब पे काम करना चाहता हूँ, तो कोई भी हिंदुस्तान में जो संगीत समझता है और हिंदुस्तानी फिल्म संगीत को समझता है, वो लता जी, आशा जी या किशोर कुमार का फ़ैन होगा ही. तो उनको ऐसी कोई एवे टाइप बात लगी कि ये भी एक फ़ैन है. तो उन्होंने कहा मेरे पे तो बहुत काम हुआ है. तो मैंने कहा कि चुप लगा गया. मैं बहुत उनसे जूनियर था, लेकिन मैं लगा रहा 1 वर्ष तक और बात करता रहा. उनसे एक पारिवारिक संबंध थे, वो बहुत मानती थी फैमिली को, लेकिन एक समय में पारिवारिक होने के साथ जब प्रोफेशनल बात होती थी तो बिल्कुल लता मंगेशकर होती थी. हाँ. तो मुझे अच्छे से याद है HMV उनका एक 80 साल की उम्र में एक एल्बम निकाल रही थी, 80 एमिनेंट सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर. उनका एक गाना था, जोगिया से प्रीत किए दुख होए, और मैं अक्सर उनसे कहता था, फ़ोन पे बात होती थी उनके बर्थडे पे, होली, दिवाली, नए साल पे, तो गाने वानों पे बात बहुत करती थी, किताब के लिए तैयार नहीं होती थी. तो टिपिकल. तो 80th बर्थडे पे उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया उनके बर्थडे के 4 दिन पहले कि दीदी आपसे बात करना चाहती हैं, आप फ़ोन कर लें. मैंने फ़ोन किया. 2009 की बात है. तो उन्होंने कहा कि बेटा वो एक फ़िल्म है, वो पंडित उनकी म्यूज़िक है अमरनाथ की. जब तक उन्होंने इतना कहा तो मैंने अमरनाथ जी की म्यूज़िक के सारी फिल्मों के नाम बता दिए. तो 1 सेकेंड का 2 सेकेंड का पॉज उधर से. फिर उन्होंने कहा कि वो फिल्म तब की है जब तो आपके फादर भी पैदा नहीं हुए होंगे. तो मैंने कहा आप नाम बताएं. तो उन्होंने कहा गरम कोट. तो मैंने कहा जी, तो बताएं. तो उन्होंने कहा कि उसका एक गाना है जोगिया से. मैंने कहा प्रीत किए दुख होए, मेरा भजन आपने गाया था. बोली वो मिल नहीं रहा है, HMV के स्टोर में भी नहीं है और उस समय YouTube पे भी नहीं था. वो मैं ढूंढ रही हूँ, मैं उस एल्बम में देना चाहती हूँ, कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा मेरे पास से मिलेगा. और मैंने उसका एक पूरा MP3 MP4 वर्ज़न पूरे एल्बम का बना के और उनको भेज दिया. तो जब भेज दिया 2 दिन के बाद कुरियर मिला, बर्थडे भी थी, बधाई दी. तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ कि तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा मैं आपका दीवाना हूँ और मैंने सारे गाने कलेक्ट किए हैं और हिंदुस्तान भर के कबाड़ियों के पास जाके, एक नागपुर में एक म्यूज़िक स्टोर होता था, एक मिस्टर हंसमुख दलवाड़ी होते थे, अब नहीं रहे, उनसे मैंने खरीदे थे बहुत रेयर सॉन्ग. तो वहाँ पे मैंने बता दिया उनको. इस बात के नेक्स्ट डे बर्थडे बीत जाने के बाद सेक्रेटरी का फ़ोन आया उनके, महेश राठौर का, और उन्होंने कहा लता जी कह रही हैं कि किताब कब शुरू करनी है. आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला, आप दीदी हैं नहीं, कि वो मेरा टेस्ट ले रही थी या वाकई उनके पास गाना नहीं था
या वो मेरा जुनून चेक कर रही थी। तो जो आपने सवाल किया, जब तक मिला नहीं था तब तक कठिन था। जब बात शुरू हुई तो मुझे 7 साल मैंने बात की, जब वो 87 साल की हुई तो बुक रिलीज़ हुई, और 87 साल की उम्र में मैंने 7 सालों में कभी नहीं पाया कि लता जी से बात करने में मुझे कोई झिझक हुई हो। और इतनी बातें करती थी, लेकिन वो इतनी मास्टर क्राफ्टमैन थी कि जैसे ये तय हो जाता था कि कल हम रोशन पे बात करेंगे या हम कल जयदेव पे बात करेंगे, तो मैं सारी तैयारी नोट्स के साथ बैठता था और अचानक से उनका मूड स्विंग होता था और कहती थी आज तो वैजयंती माला पे बात करने का मन है। अब एक आदमी जो रोशन या जयदेव तैयार करके बैठा है, वो वैजयंती माला वहाँ से कूद के वो पहुँच जाए साहिर लुधियानवी पे और फिर चली आए पंडित नरेश शर्मा पे, तो मुझे ये तो समझ में आया कि लता जी से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तो मैं सब खोल के रखता था, सब बातें करता था, और वो पूरा लिवरेज देती थी, समय देती थी कि आप समझें। बात में तो फिर हर चीज़ बात होने लगी, लेकिन एक गुत्थी है वो ये है कि कंट्रोवर्शियल सवाल मैंने सब आखिर के लिए रखे थे। मुझे लगा जिस दिन नाराज हुई कह देंगी कल से स्टॉप, और किताब आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता। ये तो पत्रकार की पुरानी तकनीक है कि लास्ट में सबसे तो जब 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, तो उन्होंने कहा कुछ और पूछने को नहीं है। तो मैंने कहा पूछने को तो बहुत कुछ है। बोले पूछो। तो मैंने पहला ही सवाल ओपी नैयर वाला विवाद से शुरू किया। तो उन्होंने कहा हाँ मैं यही सोच रही थी इतने सालों से, ये सब बातें क्यों नहीं आई। तो मैंने कहा अब यही सब बातें करेंगे। तो मैं उनका बहुत मुंह लगा हो गया था, और आप आश्चर्य करेंगे हर सवाल का जवाब दिया, हर कंट्रोवर्सी का जवाब अपने ढंग से दिया, फैक्ट्स बताए, फैक्ट्स के सारे सोर्सेज बताए, और जिन सवालों को उन्होंने इग्नोर करना था बहुत ही ईमानदारी से इग्नोर किया। कैसे करते थे वो, क्या बोलते? जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी। फिल्म इंडिया मैगजीन में बहुत गॉसिप छपती थी। हाँ। तो उसमें कहीं एक मैंने प्रसंग पढ़ रखा था कि रफ़ी साहब को तमाचा मार दिया नौशाद साहब ने बैजू बावरा की रिकॉर्डिंग के लिए किसी पत्रकार के। तो मैं पूरा फिल्म आर्काइव से सब निकाल के बैठा था। तो बोली कि ये 1951 का गाना है, 52 में फिल्म रिलीज हुई। अच्छा, शी हैज़ अ वेरी फोटोग्राफिक मेमोरी। और बेटा उस समय जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था तो शकील साहब, मैं, नौशाद साहब और रफ़ी साहब थे। इनके अब्बा भी नहीं रहे होंगे ग्रीन रूम में जब रिहर्सल हो रही थी। थप्पड़ की गूंज इनको कहाँ से मालूम है, मेरे को नहीं पता। तो ये तो गार्बेज है, ये कुछ नहीं है। और मैं तुम्हें उल्टी बात बताती हूँ कि सिर्फ 2 म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे थे, नौशाद और एस डी बर्मन, जो अपने अच्छे से अच्छी ट्यून बनाने के बाद डरे रहते थे, तो बार बार इम्प्रोवाइज कराते थे। रफ़ी साहब ज़रा इसको गा दो फिर से, लता फिर से एक बार गा दो। तो हम लोग कॉन्फिडेंस दिलाते थे कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया है, अब नया वर्जन मत बनाइए। तो बोले कि नौशाद साहब उन्होंने तो कभी किया नहीं, बस डर मुझे 2 लोगों से लगता था, एक मास्टर गुलाम हैदर से और दूसरा सज्जाद हुसैन से, क्योंकि सज्जाद हुसैन बहुत स्ट्रिक्ट थे। और 15 दिन रिहर्सल के बाद गाना, भले पहले रिहर्सल का टेक ओके हो गया, लेकिन वो 15 दिन रिहर्सल के बाद गाना रिकॉर्ड होता था। तो 2 म्यूज़िक डायरेक्टर को उन्होंने टफेस्ट माना, और इन दोनों को सबसे ज़्यादा हिला हुआ कि ये लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन किसी बात का, सुमन जी के साथ उनकी कंट्रोवर्सी, आशा जी के लिए रॉयल्टी का विवाद, राज कपूर के साथ झगड़ा, हर बात उन्होंने की। तो मुझे तो लगता है, और मैं ये कहूँगा, मैं तो बहुत छोटा अदना सा लेखक हूँ, कोई भी आदमी किसी कलाकार के पास जाए, उसकी गरिमा के अनुरूप बात करे, तैयारी के साथ बात करे, पेपराजी में ना जाए। हम लोग कुछ जूसी, कुछ फ्लारी, कुछ ऐसा ढूंढते हैं। और जब लता सुरगाथा तैयार हुई, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी मेगा हिट हो जाएगी। इन्होंने एक टीवी पे ऐलान कर दिया था कि इस साल की किताब ही सिर्फ लता सुरगाथा है, दूसरी कोई किताब नहीं है। तो हुआ क्या कि मैंने लता जी, तो पुरस्कार भी मिला जी, नेशनल अवार्ड और मामी फिल्म फेस्टिवल दोनों मिला था जी। तो मैंने लता जी से सवाल किया, मैंने कहा दीदी आप मुझे इतने सारे जवाब दे रही हैं, ये आपने आज तक क्यों नहीं किसी को बताया। उनका जो एक सेंस ऑफ पैथोस के साथ जवाब था, वो कितना कितना दर्द भरा है। 2001 में भारत रत्न मिल चुका है, मेरी किताब शुरू होती है 2009 में, एक डिकेड का फ़र्क है। उन्होंने कहा बेटा तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास आज तक जो लोग सवाल करने आए वो इन्हीं कंट्रोवर्सीज पे करने आए, या कुछ तुरंत कंटेम्प्रेरी रहा तो पूछा। कभी किसी ने नहीं पूछा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द म्यूज़िक ऑफ द इंट्रिकेसी ऑफ शंकर जयकिशन एंड जयदेव, ये गाना का क्या है। तुम मीटर और स्केल तक पूछते हो, राग पूछते हो, तुम ट्रिविया में नहीं फंसते हो।
मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि कौन से गाने को गाने में दिक्कत हुई, कौन से गाने में सुर लगाने में प्रॉब्लम हुई, रियाज कैसे किया। हमने तुम्हें स्केल तक बता दिया है कि किस किस स्केल से मैं गाती थी। तो जब पूछेगा नहीं कोई तो मैं बताऊंगी कैसे। और दूसरा कि आपसे कोई सीखने आया तो उन्होंने बड़ा हंस के, मुझे लगता है उसमें विट बहुत था, उन्होंने कहा आजकल सब सीखे सिखाए हैं, किसी को मुझसे सीखने और जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी लता मंगेशकर। क्या बात है। अनंत जी, जो आपने बॉलीवुड सेल्फी लिखी उसमें भी बहुत अलग सा प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में बताइए, आपने ऐसा प्रेजेंटेशन क्यों चूज़ किया? सबसे पहले मैं आपका और ओडिशा लिटरेचर फेस्टिवल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपने बुलाया और बुलाने लायक समझा। आभार। बॉलीवुड सेल्फी, दरअसल मैं जब किसी भी, जैसे अब इन्होंने भी बड़े लता जी की तरह इन्होंने राज सिंह डूंगरपुर का नाम नहीं लिया, इतना लंबा बोला मैंने लिया, लेकिन इन्होंने भी राज सिंह डूंगरपुर का नाम नहीं लिया। मैंने लाल किसी का नाम लिया था। हाँ, मैंने एक सवाल पूछा था। आपने पूछा था? हाँ, अभी आप आइएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि तो जब मैं ऐसे सवालों को देखता था ना कि हर कोई बच रहा है उन सवालों से, कि अब लता जी और राज सिंह डूंगरपुर के बारे में कुछ नहीं, इनकी किताब में एक लाइन है कि बड़े अच्छे मित्र थे, हम भी उतने से ही संतुष्ट हो गए कि बड़े अच्छे मित्र होंगे। तो अब जैसे सुरैया या नहीं, देविका रानी और दिलीप कुमार की मुलाकात कहाँ हुई जी? कोई उनको नैनीताल में मिलवा रहा है, कोई उनको मुंबई के सब्जी मार्केट में कोई मुंबई के किसी वो हिमांशु राय वाले स्टूडियो में मिलवा रहा है, कोई कहीं मिलवा रहा है। तो जब मैं इन चीज़ों को देखता था तो मुझे लगता था इतनी सारी एनोमलीज क्यों हैं? क्योंकि मुलाकात तो एक ही हुई होगी। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि हम सब लोग लिखने में भारत का पहला, फर्स्ट इन इंडिया, इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि फैक्ट को चेक करना चाहिए। तो फर्स्ट इन इंडिया में क्या हुआ कि 3-4 बार देविका रानी और दिलीप कुमार के मुलाकात करा दी लोगों ने, और ये सब रिकॉर्डेड है किसी बुक में, अच्छी वेबसाइट्स पे, कई तो भारत सरकार की वेबसाइट्स पे भी हैं। तो मुझे ये लगा कि मुझे इनको दूर करने के लिए एक किताब लिखनी चाहिए और उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकें। मैं थोड़ा पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, सिनेमा में बाद में आया, बहुत देर से आया, तो मुझे लगा कि इन एनोमलीज को दूर करने के लिए फिर मैंने 8-10 ऐसे लोगों को चुने और उनकी जितनी बायोग्राफीज अवेलेबल थी सबको पढ़ा जी। और उसके बाद जो ऐसे बिंदु थे जिस पे कंट्रोवर्सी या जिस पे अलग अलग तरह की चीज़ें बाजार में उपलब्ध थी, उनको पॉइंट आउट, मतलब अलग किया, और अलग करने के बाद उनको मैंने एक किताब की शक्ल दी ताकि उनकी एक ऑथेंटिक प्रामाणिक तस्वीर सिनेमा प्रेमियों के पास पहुंच सके। ट्रिविया के बारे में बहुत जानना चाहते हैं लोग, किसका कैसे। अब गुलजार साहब और मीना कुमारी की डायरी को लेके भी बहुत कुछ चलता है, बिल्कुल है ना, सबको पता है, बट किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हर कोई बोलता है कि गुलजार अपनी कविता नहीं लिखते, मीना कुमारी की डायरी से निकाल के एक दे देते हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये कैसी बात है। फिर गुलजार साहब और मीना कुमारी के बीच के झगड़े की एक बात है जिसमें थप्पड़ भी किसी ने किसी को मारा, इस तरह की चीजें भी बहुत चलती हैं। और इन भारत में क्या है कि पॉलिटिक्स और सिनेमा और स्पोर्ट्स में सब कुछ सब जानते हैं, तो उनको सबको सब कुछ पता है। पिछले दिनों हम यही देख रहे थे, हम लोग अभी स्टेशन के पहले यही बात कर रहे थे कि भारत में सिनेमा पर लिखने वाले इतने लोग हो गए, उनको लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट और मिड शॉट का पता नहीं है, मगर लेकिन वो फिल्मों पे जरूर लिखेंगे जी। तो ये मैं नेशनल अवार्ड की जूरी के चेयरमैन होता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जैसे लगता है कि ये क्यों आई, लेकिन उनकी भी इच्छा होती कि उनको नेशनल अवार्ड जी। तो सिनेमा एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर राजनीति से भी ज़्यादा गंभीरता से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आर्ट पर जब आप लिखते हैं तो आप वो फिक्शन नहीं लिख सकते, और फिक्शन लिख के आप आने वाले भविष्य के जो, मतलब भविष्य के जो पीढ़ी के लोग होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनका आप नुकसान करते हैं। क्योंकि हमारी जो समृद्ध परंपरा रही है, हमारे जो कलाकारों की विरासत रही है, उसको हम कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, जैसे अभी मैं
बॉलीवुड सेल्फी लिखने के बाद सुपरस्टार सेल्फी लिख रहे हैं। जी जी। तो उसमें मैंने ये किया है कि जो ब्लैक एंड वाइट एरा के हमारे सुपरस्टार्स थे 1930 से लेके और उसके बाद के दौर के, तो उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी लिखी जाए। बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि अब उनके प्राइमरी सोर्सेज नहीं बचे। बिल्कुल। तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके करीब जाया जाए, और इसी करीब जाने के क्रम में मुझे लगा कि जो भारतीय सिनेमा का 20 साल का या 25 साल का या 30 साल का अगर पूरा पीरियड आप देखें कावेरी जी, तो वो पूरा का पूरा भारतीय सनातन परंपरा पर, भक्ति काल पर, बिल्कुल, राम पर, और वही सचिन भौमिक और राज कपूर का जो मशहूर किस्सा है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 1 मिनट सुना दूं। भौमिक साहब बहुत बड़े लेखक थे, 12-13 लगातार हिट फिल्में उनकी आई, बहुत हिट फिल्में लिखी उन्होंने, और वो राज कपूर साहब से मिलना चाह रहे थे। राज कपूर उनको मिलने का समय नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से शॉर्ट करके बताता हूँ, बड़ी मुश्किल से राज कपूर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो राज कपूर ने अपनी उस फेमस कुटिया में उनको बुलाया जहाँ बैठ के वो सेशंस करते थे, सारे उनके लोग बैठे थे मित्र। तो भौमिक साहब ने पूरी स्टोरी सुनाई फिल्म की, और पूरी कहानी सुनने के बाद राज कपूर साहब ने कहा कि भौमिक साहब, भारत में तो एक ही स्टोरी चलती है, राम था, सीता थी, रावण आ गया। एक हीरो था, एक हीरोइन थी और विलेन आ गया। तो यही कहानी चलती है, और इसी 3 पंक्ति पर अगर आप कुछ लिख सकते हैं हमारे लिए तो लिखिए। हाँ। तो अब राज कपूर के बारे में तो राहुल रवैल साहब अभी सारी बातें बता देते हैं, उनके पास मेमोरीज हैं, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, बहुत सारे ऐसे, अभी हम लोग गोवा में थे तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे किस्से राज कपूर के सुनाए। तो प्राइमरी सोर्स तक जाना बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरी कोशिश ये होती है कि जो विसंगतियां हैं या जो एनामलीज हैं राइटिंग में, उसको दूर करने का अगर एक छोटा सा प्रयास भी मेरी किताब से या मेरे लिखने से हो सके, तो इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें लिखता हूँ। वंडरफुल। और एक बात मैं इसमें जोड़ूंगा, बहुत अच्छी बात अनंत जी ने कही, यही मेरा भी एक प्रयास रहता है, मैं हर जगह कहता हूँ नए लोगों से जो सिनेमा के लिए लिख रहे हैं या म्यूज़िक में लिख रहे हैं, कि वो ट्रिविया में बहुत बिलीव करते हैं। वो गूगल सर्च करेंगे तो उन जगहों पे जाएंगे जो फिल्म मार्केटिंग के लिए उनके पीआर एजेंसी ने उस फिल्म के लिए या उस कैरेक्टर के लिए कुछ लिखवाया हुआ है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन वो सब कुछ विज्ञापन है। और मैं बड़ी मैगजीन्स का भी नाम लूँ, जो सारी बड़ी फिल्म मैगजीन्स रही हैं, आप खंगाल डालिए तो उसमें से कायदे का इंटरव्यू या काम की स्टोरी, कवर स्टोरी नहीं मिलेगी। किसी की फिल्म हिट हुई है, कोई फ्लॉप हुआ है, कोई कंट्रोवर्सी हुई है, किसी का किसी के साथ मेजर अफेयर हुआ है, तो बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। लेकिन आप किसी एक बात के लिए, आप एक मुग़ल आज़म और पाकीज़ा की डिटेलिंग के लिए अगर आप कोई मैगज़ीन खंगालना चाहें तो 50 साल में कुछ नहीं मिलने वाला आपको, इंडिविजुअल राइटिंग में भले मिल जाए। तो उसकी प्रॉब्लम से अभी इतना गार्बेज सोशल मीडिया पे है कि नए लोग वो कुछ सुन के कोई रील देख करके पकड़ लेते हैं कि ऐसा हुआ था, जबकि वो बिल्कुल ट्रैश है। आप इससे बहुत 2-4 होती होंगी। अब कैसे उसमें से सही बात निकाली जाए और कौन सी बात को सही माना जाए। लता जी वाली किताब में मैंने एक प्रयोग ये किया कि सारी कंट्रोवर्सीज़ के इंटरव्यू को तो एज इट इज़ रखा, क्योंकि वो सीधा लता जी का वर्जन था। लेकिन जब मैं उनके एनालिसिस में उतरा तो जैसे वो जयदेव के साथ विवाद था, हम दोनों वाला, जो जयदेव की शिकायत पे SD बर्मन से मनमुटाव हुआ था, तो मैंने सारे वर्जन लिखे कि फलां की किताब में ये वर्जन है, इनकी किताब में ये वर्जन है, और 4 वर्जन देने के बाद मैंने लिखा लता जी ये वर्जन बताती हैं, और लास्ट में लिखा कि ये आप पर है कि आप किस वर्जन के साथ खड़े होना पसंद करते हैं, कि आप अपना सत्य निकाल लें, क्योंकि हमेशा आधी हकीकत आधा फसाना के बीच में ये सब ट्रैवल करता है। तो और एक बात की तकलीफ ये है सिनेमा को, राज सिंह डूंगरपुर वाला फिर जी, और एक चीज़ ये है कि सोशियो कल्चरल या सोशियो पॉलिटिकल किस्म का गंभीर लेखन सिनेमा को लेके लोग करते नहीं हैं, कम लोग करते हैं। जब मैंने किताब शुरू की तो हर आदमी मुझ पे हंसता था, लता जी के बारे में ऐसा क्या है जो तुम बताओगे। मैंने कहा मैं वो बताना चाहता हूँ, मैं कोई नया चीज़ नहीं निकाल के लाऊंगा, लेकिन एक इतनी बड़ी पार्श्व गायिका के बनने का जो एक करिश्मा है, जो एक दीवा वाला पीरियड है, वो कैसे लोकेट होता है, मैं उसको लिटरेरी एस्पेक्ट में बताना चाहता हूँ। राज सिंह डूंगरपुर से के संबंध के बारे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आपको वही पता है जो सारी दुनिया जानती है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, मैं आपका राइटर हूँ, तो मैं ब्लैंक स्लेट हूँ, आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक मित्र थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे,
आप इसको जिस तरह से लिखना चाहें लिख दीजिए। तो एक जगह जहाँ दोस्तों की चर्चा की है, मैंने लिखा कि उनके अभिन्न और पारिवारिक मित्रों में राज सिंह डूंगरपुर थे, और जब उनको कोई अपने किसी भी ऐसे समय में जब उनको कोई राय लेनी होती थी या जब उनको अपने एक दोस्त का कंधा चाहिए होता था तो वो राज सिंह डूंगरपुर थे। मुझे लगता है कि इसमें मैं वो बात कह गया हूँ जो एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड के लिए होता है। मैं थोड़ा सा पिछले ज़माने की तरह सोचता हूँ, यंग जरूर हूँ, तो मुझे लगता है कि एक जो गरिमा है एक कलाकार की, उसको डेंट करने का मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि मैं लता मंगेशकर प्लेबैक सिंगर को लोकेट कर रहा हूँ। मैं लता मंगेशकर की पर्सनालिटी को डिरेल करके या डिमीन करके कोई नई चीज़ तोप दाग दूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। मेरे लिए लता जी आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज वो रसिक बलमा से या आज वो दूसरे गानों से जिंदा हैं। तो मेरे लिए वो सत्य था और वही सत्य मैंने दुनिया के आगे रखा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब आप जो चुनते हैं वो भी इतने कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं। गुलजार साहब, उनके पास पहुंचना, मतलब उनके पास पहुंचना ही बहुत होता है। गुलजार साहब के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। ये मेरा सौभाग्य रहा कि इन सबसे मुलाकातें हुई और सबसे मैंने 1-to-1 बात करके काम किया। सिर्फ बेगम अख्तर पे नहीं अलग से किया, क्योंकि बेगम अख्तर हमारे यहाँ कोर्ट सिंगर थी फैमिली में, तो बहुत सारे लोग जिंदा थे जो बेगम साहिबा को डायरेक्ट जानते थे। तो इट्स नॉट अबाउट माई बुक, इट्स अ कंपाइलेशन, और सारे बड़े लोगों ने जो बेगम साहब के नज़दीक थे और जो अब तक बेगम साहब पे बेस्ट छपा था, उसका एक तरह का वो एक रीडर है वो। लेकिन गुलजार साहब के साथ बात करने में भी यही लगा कि मैं हर चीज़ पूछता गया। वो इतनी फुल लेंथ किताब है, तो मैं एडिट कर रहा हूँ उसे, अभी 6 महीने से एडिट हो रही है। तो एक दिन गुलजार साहब ने से मैंने कहा कि कुछ ज़्यादा ही मैंने चुस्त कर दिया है। तो उन्होंने कहा, बरखुरदार, हम 24 रील की फिल्म बनाते हैं, 20 रील हम शूट करते हैं और 16 रील 17 रील की फिल्म ही दुनिया में जाती है, लेकिन वो जो 3 रील हम रिजेक्ट करते हैं वो सब बहुत अच्छा होता है, बहुत दर्द होता है उसको काटने में। तो तुम्हें क्यों नहीं दर्द हो रहा है काटने में, इसलिए इसको काटो। तो मैं बहुत बकबक कर रहा हूँ, रिपीटिशन नहीं हो, ये ना हो। उस एस्पेक्ट में भी मैंने उनकी डायलॉग राइटिंग और पुरानी चीज़ें और सारा बिमल रॉय स्कूल और वास्तु चैटर्जी काफ़ी कुछ लिखा है जी। तो वो काम किया है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन वो 1-to-1 गुलजार साहब के साथ बातचीत है, तो वो पसंद आएगा। वो काफ़ी मज़ा आएगा वो पढ़ने में। अब आनंद जी, आप तो लेखक भी हैं बट पढ़ते भी हैं, तो ऐसा आपने कुछ पढ़ा है रिसेंटली जो आपने सोचा ये मुझे किताब अच्छी लगी, इसमें ऐसा है जो मैं पहले नहीं जानता था? जैसे हाल ही में के बास की एक ट्रांसलेटेड आई, बहुत अच्छे थे, मुझे लगा वो उसमें मंटो की जैसे झलक थी। मैंने वो तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने एक वेंडी डोनिगर की किताब पढ़ी थी, ट्रूथ ऑफ रिंग्स। जी जी। और उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं वेंडी की तरह क्यों नहीं लिख सकता हूँ। और बहुत ईर्ष्या होती है ऐसे लेखकों से। पूरी दुनिया में अंगूठी का क्या महत्व है, किस कल्चर में, किस देश में अंगूठी गोल है तो उसका क्या मतलब है, उस पर अगर हाथी बना हुआ है तो उसका क्या मतलब है, उस पर सांप बना हुआ, उस पर स्त्री पुरुष बने हुए हैं तो उसका क्या मतलब है। इतना महीन, मतलब मिस्र की सभ्यता से लेके और चकित चितब मुद्री पहचानी जब हनुमान और सीता का संवाद हो रहा था अशोक वाटिका में, और जब वो अंगूठी देते हैं, वहाँ तक लेके इस माइन्यूट तरीके से अंगूठी का वर्णन किया है। मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं में, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय भाषाओं में बहुत ऐसा लेखन होना चाहिए जिसमें हम इतनी गहराई से डूबकर अंदर उतरकर और वर्ल्ड वाइड क्या उसका आयाम है, क्या एस्पेक्ट हैं, उसको अगर हम सामने ला सकें। तो मुझे तो वेंडी डोनिगर के उस किताब से, बाकी से मेरी सहमति असहमति अलग है उनकी, जब वो हिंदू माइथोलॉजी कहती हैं उसको, तो माइथोलॉजी से मेरी अलग उनसे विरोध है, लेकिन वो पर्टिकुलर ट्रूथ ऑफ रिंग्स जो उनकी किताब है वो अद्भुत है। और मुझे लगता है कि उसके बारे में व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब चर्चा होगी तब हमारे स्कॉलर्स आगे बढ़ेंगे और उस तरह की किताबें लेकर सामने आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत में ऐसा लेखन नहीं हुआ होगा, मेरे सामने नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ इतना लिखा गया है, हमें आधा पता हम लोग, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बातचीत में
कि ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञान तो असीमित होता है ना। तो जो ज्ञान है वो हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूँ, और जो हम नहीं जानते हैं उसी को लोग मान लेते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा एक ये डिस्क्लेमर दे के चलता हूँ कि मेरी नज़र के सामने से वो पुस्तक उस तरह की नहीं गुजरी है। हो सकता है क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल ने स्त्रियों की सज्जा पर, मतलब उनके सजने संवरने पर एक पूरी किताब लिखी है कि कैसे आप नथ पहनना, कैसे, अच्छा वो भारतीय पद्धति में उड़ीसा में कैसे पहना जाता है, चेन्नई में कैसे पहना जाता है, जम्मू कश्मीर में, तो महिलाएं किस तरह का टीका लगाती हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि ये मांग के पास टीका लगता है, कई जगह यहाँ साइड में लगाती हैं महिलाएं। तो उसका क्या महत्व है और वो हमारे स्क्रिप्चर्स से किस तरह जुड़ता है, वासुदेव शरण जी की एक पूरी किताब है इस पर। क्या बात। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ लिखा गया है, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नई पीढ़ी के सामने ऐसे ही मंचों से लोगों तक जब बात जाएगी तो इसकी चर्चा होगी। और इस लिहाज से मैं कहता हूं कि इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल की बहुत आवश्यकता है पूरे देश भर में। बहुत लोग कहते हैं कि लिटरेचर फेस्टिवल में कुछ नहीं होता है। मैं आपके मंच से उनको ये आज उत्तर भी देना चाहता हूं कि लिटरेचर फेस्टिवल या लिटरेरी फेस्टिवल ऐसा मंच होता है जहां से आप एक साथ समूह से संवाद कर रहे हैं। जितने लोग सामने बैठे हैं उससे ज़्यादा लोग अभी हमें ऑनलाइन सुन रहे होंगे। तो ये जो विस्तार मिलता है ये पुस्तकों से नहीं मिलता, ये जो ज्ञान का विस्तार है वो ऐसे ही मंचों से मिलता है। बिल्कुल। और आप लिखते रहें दोनों, आप प्रिंस ऑफ अयोध्या और आप प्रिंस ऑफ अयोध्या के मित्र, दोनों लिखते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बात तो वैसे करते सकते। May I request Lakshmi Anand ma'am to be there on the stage to present the mementos to the panelists? Can we have a huge round of applause, please, audience? Ma'am and sirs, can we take a pause for a group photograph? Thank you, sirs. Thank you, ma'am. The next session of the Odisha Literary Festival 2022 themed My Country and My Kahani is titled North and South, Does Our History Need to be Reoriented? To have a discourse on the same, we have with us Dr. Nandita Krishnan and Pavarti Sarma. Dr. Nandita Krishnan is a historian, environmentalist, and a writer based in Chennai. She was responsible for the revival of painting traditions of the Kurumba tribes, pottery tradition of Kota women, and traditional drawing and painting in Mamallapuram. She has published more than 23 books, some of which has come up in editions for more than 20 times. Parvati Sarma's debut, The Dead Camel and Other Stories of Love, earned her a following for its depictions of love and sexuality in urban India and its lightness and lucidity. Her recent works on the lives of Jahangir and Akbar have been much acclaimed. Here we go for the session. Kaveri ma'am, please. Yeah, thank you so much. We're all very excited because the Chief Minister is about to come, so I'm being told that I better hurry up. We will, but we will also make sure that you get enough time. Nandita, I want to start with you right away because I read this marvelous essay by you on mythology and history and how the two, by disassociating the two, we've done a great disservice to our history. And I thought that was a very profound idea. And you actually showed why it is so. Yeah. Firstly, let me thank you, Kaveri, for inviting me, and I'd like to also thank the New Indian Express for inviting me. I write for them once a month, so it's... Yeah, so it's like having our own in-house author. Yes. Thank you very much. What I did was I took up the Ramayana, and I went to many sites. Of course, the well-known ones, Ayodhya and all, will naturally talk about Ram.
But having worked with tribes, I went to many of the tribal areas, and there I found that they had a memory of Ram which stops at the point where he came. For example, the Saura tribes, you have them in Orissa too, where he comes to Shabari and she gives him those fruits. And they don't know that he went to Lanka and came back, you know. But they know they stop. He came and he ate with us. You know, that kind of thing. And there were many other, the Nishadas, they still call their ancestor, the man who took Rama across. So these things are memory. You see, mythology is the ancient man's memory of his past, his universe. So to say everything, yes. I mean, if a monkey flies across the mountain, you have to give that much poetic latitude to Valmiki. After all, he was not a non-fiction writer. I love what you said, that he had to sell his story. Yes, he had to sell his story. Who's going to read it if it's a dull newspaper report? Right. So he had to sell it. So you will find that there is an iota of truth in everything, because, you know, even if you take the best works of fiction, take Shakespeare, he based everything on a true event, on Plutarch's lives and so on. So there is no perfect fiction. What has happened, unfortunately, is that the British made Indian history into myth. And I mean, India's past, they said proto-history, all that is myth. And history begins with Alexander. Now, are you trying to tell me that we started only with the 4th century BC? That's just not possible. And they gave an interpretation of history as they wanted. For example, we are in Kalinga. And let me talk about Kalinga. We have never heard anything about Kalinga before or after Ashoka. Exactly. It's as if it didn't exist before. Drops off the map. It drops off the map. But what we don't remember is that Ashoka was already a Buddhist when he came here. He warns the people of Kalinga, if you know, don't do as I tell you, I'll come back and my descendants will come back here. He threatens the tribes, even after those 100,000 people were killed and everything. And he takes back 150,000 slaves. They are deported to Magadha. So he's good and not so good, you know. Let's take things as a fact. And definitely, I think there is a kernel of truth in every so-called mythology. You know, I don't like the term mythology, because are you trying to say that Dwarka, where they found the palace, if you read S.R. Rao's writing about how he discovered Dwarka, he went with the Mahabharata in his hand, and he looked at the Mahabharata's descriptions, and he searched for what was mentioned there, and he found that. It happened to be underwater, so we can't go and see it. And we have not been very good historians as Indians, I must say. But there was always history, and it exists. And I'll come to the south later. Parvati, I wanted to bring up this other fact. For instance, in your new book, you have a wonderful sort of like a duet between Badauni and Amir Khusro. So one praises and the other disses, you know. So you have two sources of Akbar, who was the great. Again, a very interesting dialogue almost, and I love the way you're able to use both the sources. Talk a bit about finding these sources and getting them, you know, to tell you a story. And then creating this wonderful story out of it. Well, thank you very much, Kaveri, and thank you for having me here, you and the New Indian Express. It's lovely. It's a pleasure to be here. It's my first time in Odisha too. I'm very glad to be in this state. I think that was, to me, one of the most enjoyable. You know, there's a sort of embarrassment of riches when it comes to sources on Akbar, who was my last subject. And it's really very fortunate that these sources don't at all agree with each other on anything. I mean, Badauni and Abul Fazl was Akbar's court historian, and Badauni was employed in Akbar's court as his, he worked as a translator for many, working in fact on translations of the Mahabharata and the Ramayana.
and he, the two of them joined on virtually the same week or the same month, joined at the same rank. But about Abul Fazl rose to great heights. Badauni remained sort of stuck. Abul Fazl became Akbar's confidant, his friend, his historian, and his great admirer. Eventually paid for that intimacy with Akbar with his life when he was assassinated by Akbar's son Salim. Badauni, on the other hand, became more and more disenchanted with, Akbar's, what he perceived as Akbar's heresies and blasphemies and, unrelenting sort of experimentations with all kinds of ideas, all kinds of faiths. And while Abul Fazl is writing this, this court history of his, which is fabulous. I mean, it's a monumental work of history. It's full of detail, full of course, praise, full of event. Badauni is sitting possibly late at night, secretly scribbling his angry, bitter thoughts about the emperor in his secret diary, which is published after Akbar dies. And to me, and then there are other sources too, amongst them the Jesuits, who are, also not particularly, somewhat more critical again, but in different ways. But these two, being so close and yet so different, allowed me the facility to see Akbar in not just as Akbar's the Great, because right from the time of his own life there have been opinions about him have been contested. So if you were to only read Abul Fazl, if that was the only source that had existed, it might not I might not even have wanted to write about see Akbar not just as either this superhuman hero or this unmitigated villain, but rather as a man, a very, very complicated man with many, many different sort of facets to his personality. Yeah. And which brings me to, when we talk about Akbar, you've also written on Jahangir and Babur for children, which brings me to that idea that we actually have, that perhaps the North has been disproportionately represented in our history compared to the South. Do you agree with that? Absolutely. I brought this just to tell you. Ishwari, these are textbooks, okay? Right. Not later literature. Ishwari Prasad, who's a textbook for BA history. Vedic Age to Rajputs is 115 pages. The Deccan and the Far South, 7 pages. 7 pages. Then the medieval Islamic period, that is the Sultanate and the Mughals, 190 pages. And medieval South India doesn't exist. No. R.C. Mazumdar, South is 9 pages. The North is 171. Then the medieval period in the North is 192. He gives 77 pages to Vijayanagar and oh, not bad. He gives 3 pages to Orissa. Okay. The only historian who looked at the map and said, oh dear, there's a place called Orissa. And many of them don't bother about the East Bengal. Nobody mentions the Ahom kings, who are the only people who could keep away the Mughals. They were never conquered. I mean, there's so much. For example, in the south, take the Cholas. They are the only people with an enormous navy who conquered with their navy all the land from Sri Lanka all the way to Southeast Asia, Malaysia, Indonesia, and they went as far as Vietnam, and they went and colonized as far as Vietnam and Philippines, and they traded up to China. How many people know that the last Hindu king of the Philippines was a Chola king? Wow. And he was forcibly converted and then removed. I mean, these are all things which, to give you, to tell you, even many Tamilians don't know. Right. So it's not as if it's not known, but you can see, that's why I brought this. I counted the pages. Remarkable, yeah, thank you. This is a work of... because I was shocked when I saw only 7 pages or 9 pages. I hope people have seen Ponniyin Selvan at least, and some will at least read Kalki if nothing else. But that's not history, that's historical fiction. Exactly. They've taken 2 or 3 characters who lived in that period
But at least he shows the navy. Yeah, that's what I wanted to ask you, and I wanted to bring in Parvati because she's written Jahangir as historical fiction as well. You know, as history, not fiction. Yeah. So I wanted to bring you in here and talk a bit about this, and then we'll go to Nandita, and then we'll have to close the session, or otherwise I'll be thrown off the stage. Yeah. On the question of North and South. Yeah. Yeah. Well, no, as Nandita said, it is a rather, we're talking about North and South, well, when we're sitting in the East, you know, so between the Cholas, say, and the Mughals, in Odisha, somebody may say, well, what about the Gangas? What about the, the Gajapatis? So I certainly, I think it's a complicated question. It's certainly, I think in all histories, some dynasties, some events acquire disproportionate presence. I mean, say the Tudors in England, it sometimes feels as if Netflix would collapse if there was no Tudor dynasty, and they just sort of, the Romanovs of Russia, I mean, of the Russian Empire, they have a larger-than-life personality. The Mughals in India certainly have had a great hold on the popular imagination and the scholarly imagination for a very long time. Partly perhaps because they are just a sort of larger-than-life, fabulous, sort of magnificent dynasty. And partly, again, maybe to go back to what you were saying in the beginning, the British history, British history writing of the colonial period has something to do with this too, because the British arrive at about the beginning of Jahangir's reign is when the East India Company is founded, and the first ambassador, Sir Thomas Roe from King James's court, arrives here. And at that time, England is this impoverished little country of no consequence, seeking desperately trade with this vast, rich, powerful empire. And you could see from Thomas Roe's writing how bitter he is, how hurt his dignity is to have to sort of bow and scrape over here in Hindustan. And it's the same company that then eventually exiles and removes Bahadur Shah Zafar. And the history that is written by the colonial, victorious British Raj is seeking in some ways to counter, to sort of position itself against sort of the Mughals, right? So a lot of the writing is trying to say, well, they were really bad, we are much better. And therefore, there's a lot more research, writing, translation of that time. But having said all of that, I think certainly that India has one of the richest troves of histories in the world. And from my own memory of learning history in school, I think there's a concerted and optimistic attempt to try and bring everyone in. But eventually, what happens, it becomes a kind of listing, because there's only so much you can say. There's only so much space that you can devote to every region, every space, and which is why partly history turns sometimes into one of the least favorite subjects in schools, because it becomes almost a recitation of names and dates. But in fact, once you actually start getting into it, once you start reading region by region, place by place, it's just fascinating, and there's just so much to learn and to understand and to read and to discover. So I would certainly agree that we should have more and more of everything. Nandita, last point. Can I just add a little bit to what she says? Yeah. It's likely that the British did not want to write about the South when it came to the British, to colonial history, because the Portuguese were thrown out by Queen Abaka of Ullal in coastal Karnataka. King Marthanda Varma of Travancore defeated the Dutch East India Company, and they left the country. All the early revolts against the British were in the south. The people who defeated him were Queen Mangamma of Madurai, Velu Nachiyar of Shivaganga, who had an entire battalion of 4,000 women, whose commander poured oil and ghee over herself, jumped into the British depot and blew it up, and that was
They had to So sue they for said, peeps. let us not go there. So I think there was a point in the British not writing about the South. But as a result, I mean, everyone talks about First War of Indian Independence, 1857. My God, there have been so many in the South. Yeah. So I think our historians, Indian historians, post-independence, Yeah. have done a great disservice to India. Because it's a short period of 200 years, and you could have included everyone in that. I leave it to both of you to take this, to take that mantle forward. I think we're reading so much from, people like you that we really don't need our historians anymore. Well, I think Anirudh Kanisetti, Manu Pillai, these people have been doing a lot of work now I think they've on the done deck wonderful work, and like Nandita as well. Thank you very much, guys. I'm so sorry I have to cut this short, but I can talk forever. Thank you. May I request Lakshmi Menon Giving ma'am me to very please be little. there on the stage to present the mementos to the panelists. Indeed, that was an insightful session regarding Indian history. Guys, can you have a generous amount of applause, please? Can we take a moment for a group photograph? Thank you, ma'am. Thank you. Ladies and gentlemen, as we await the arrival of the Chief Minister in a few moments from now, I would request you to kindly bear with us for a 2-minute break. I would also request all of you to kindly keep your cell phones on either silent mode or switched off. जी
before we commence the valedictory session, I would take this opportunity to extend thanks to our partners, the Aditya Birla Group, KEAT, deemed to be university, JSPL, S&M, MGM Minerals, MCL, NALCO, IMFA, Rungta and Sons, ANMS, media partners Sokalo and Nandi Ghosha, and 93.5 Red FM, hospitality partner Welcome Hotel, outdoor partner Ajanta, and Oxford Bookstores.
hello, 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 hello. Hello, hello. Check, check.
Good evening, ladies and gentlemen. For the valedictory session of the Odisha Literary Festival 2022, My Country, My Kahani, we are truly honored to have amidst us the Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji. Shri Naveen Patnaik is known to be a man of few words, but he is a man of million achievements. A leader who has scripted history in the last 25 years, steering Odisha to food security, making it a global model in disaster management and exemplifying women's empowerment. He has done it all. He remains politically invincible, yet his popularity with the classes and the masses keeps growing with each passing day. He has not just put Odisha on a path of progress with his vision that encompasses holistic development of the state. Shri Patnaik has led by example which few others in India can emulate. He made Odisha sports capital of the country and gave Indian hockey a position which is a feat that will remain unmatched. Hosting back-to-back Men's World Cup 2023, the FIFA Under-17 Women's World Cup, he's taken the sports world by storm. Someone who has dedicated his life to the cause of Odisha is undeniably the best person to speak on My State, Stories of the Soul. May I please request the CEO of the New Indian Express, Ms. Lakshmi Menon, to kindly present the bouquet to the Honorable Chief Minister. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would now request the New Indian Express Odisha resident editor, Mr. Sibo Mohanty, to kindly come on stage and welcome Shri Patnaik ji. Respected Sri Naveen Patnaik, Honorable Chief Minister of Odisha, respected Sri Prabhu Chawla, Editorial Director of the New Indian Express, CEO Ms. Lakshmi Menon, all our esteemed speakers, panelists, guests, and everyone present in the audience. It's my privilege to be here to welcome you all to the valedictory and the most important session of the Odisha Literary Festival. Most important because we have amidst us our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik. Over the years, he has always found precious time to attend the Odisha Literary Festival. And it's no surprise given the demanding schedule owing to his steadfast commitment to Odisha and his love for literature. A known author and an avid reader, several of his initiatives had catapulted Odia language and Odisha's treasure trove of literature. Recognition of Odia as a classical language, incentives for studies in Odia, setting up academic chairs in Jawaharlal Nehru University and Banaras Hindu University to further Odia language and literature are some examples from an otherwise long list. An eminent author, before he helmed Odisha, he has scripted a story of transformation for the state. A single man, he has time and again stated that his family is 4 crore Odias, which endears him to the people of Odisha to such an extent every leader in the world hopes and aspires to achieve. Thank you, sir, for being here with us again. This has been a wonderful journey for all of us. From 2012, when we started the first literary festival in the state, to the 10th edition this year. For record's sake, we have had over 270 speakers who shared with us innumerable magical stories of Indian literature, history, arts, cinema, and much more over 130 sessions. Our commitment to be a small part of state's discourse to promote Odisha and Odia literature remains as vigorous as it was 11 years back. This pursuit to bring luminaries from a varied field to Odisha and engage in meaningful debates and discussions will continue. I don't wish to stand in the way of what we all are waiting for, to listen to our Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik. We, on behalf of the New Indian Express, welcome you to the valedictory session once again, sir. Thank you, and I would request Sri Prabhu Chawla ji to take over from here. Thank you, sir. Namaskar and good evening. मैं आपके और सीएम के बीच में ज़्यादा देर नहीं खड़ा रहूँगा, because you want to hear him, not me. And I know Mr. Patnaik for the last almost 25 years. If we are standing here today for the 10th time to celebrate Odisha Literary Festival, but for him, but for his active support, but for his active guidance,
supported by his CMO led by Mr. Pandian, who's sitting behind, we would not been able to hold this here at all. I must thank him once again from the bottom of my heart, both of them, that we are committed to it because we really think Odisha is the real literary capital of India. All the great writers were born here. They have written good literature and they have to be made famous. So we wanted to make Odisha Literary Festival to be part of national literary dialogue. Because Odia literature has been kept out of Indian literary dialogue. So it is our contribution as a national newspaper to also bring Odia, which is most of part of it is rich heritage, and one of the best governed state in India. I don't want to say much about Mr. Naveen Patnaik, because I now have called one word MWMW. You will be wondering what is MW and what is MW. It applies to both of them, the Prime Minister of India and Mr. Naveen Patnaik. NW means for Modi, maximum word, maximum work. And for Mr. Naveen Patnaik, MW means minimum words and maximum words. I don't know, it is not to be taken otherwise. If I count the words spoken by Mr. Patnaik during the last 25 years, he will complete in 25 years as Chief Minister once the term is over. That is a record of its kind. The number of words spoken by Mr. Naveen Patnaik in 25 years perhaps may be less than the words spoken by our Prime Minister every day. So in that way, work speaks louder than that. In terms of work, his delivery system, his responsibilities, accountability is much more transparent, visible. If Odisha is now one of the topmost states in India, it is because of Mr. Naveen Patnaik, who believes in work and money. So with that, I will just request, we'll play a little video which the Prime Minister, Chief Minister has given to us, and after that, we'll have a short and little question and answer session with him, which he rarely agrees. He is very indulging when I come to me, and I take some liberties with him, which will be after his video is played over to him. Mr. Prabhu Chawla, invitees, ladies and gentlemen, Odisha, my state, has always been an epitome of rich art, culture, literature, and traditions that have been honed over centuries. These have had a major impact on the consciousness of millions across the globe. Today, Odisha is at the cusp between tradition and modernity, which brings forth so many hues of life. Close to the beginning of the 21st century, one of our greatest writers, Fakir Mohan Senapati, came out with his mind-blowing story of Remati, the girl who was cursed for daring to study. That was the reality of Odisha in those times. Contrast with the story of Karma Mudali in the third decade of the 20th century. The tribal girl from the remote Bonda Hills coming to the capital city to realize her dreams with flying colors by studying in RD Women's University. The current story is the story of present-day Odisha, a story of immense possibilities. Not only this, Kalahandi is a district known long for its poverty. Now Kalahandi is a major producer of rice in Odisha, helping us to contribute to the public distribution program. So in sports, the national and international sporting community is looking to Odisha for conduct of their events. Look at our role during the second wave of COVID-19 pandemic. We led the move to supply oxygen all over the country to save lives. We are also the center of attraction for investors. It's a story of a turnaround. Numerous such stories speak on the giant leaps we are making in different fields. For many years, my state has consistently outgrown the pace of national growth rate. We have been able to keep pace with the latest developments in technology,
to ensure equitable and inclusive growth. Our story of development has so many facets as lives are transformed in countless ways. May it be food production or disaster management, may it be women empowerment or healthcare, sports, education, or service delivery. Transformational changes are visible all across the state. The stories of our transformation are creating buzz around the nation and across the globe. Our state is filled with marvelous stories that depict concepts such as institution, harmony, cooperation, sharing, and reverence for people's lives. These concepts have manifested timelessly, expressing themselves in a myriad of storytelling forms. The story of a confident Odisha is truly inspiring, timeless, and is a never-ending journey. I congratulate the New Indian Express for the 10th edition of Odisha Literature Festival and my best wishes for its flourishing and to continue into the next decade. Bande Utkal Janani. Thank you, Honorable Chief Minister. There are many questions. Of course, you have set the agenda already. And by running the state so smoothly, you have also given an example how the state is run. With a clean bureaucracy, committed leadership, we can see how can a poor state become one of the first-ranking states in India. But now the question arising every day, you must have heard also, but all the chief ministers which don't belong to the BJP, they have been raising about questions about threat to federalism. That federalism structure is under threat. Because of your relationship with all of them, good relationship from Sharad Pawar to Modi, what do you think you as a state chief minister have been getting your problems resolved amicably by the Prime Minister? Do you think federalism under threat? As far as I'm concerned, as far as my government is concerned, we have a constructive relationship with the central government because our concern is only the development and welfare for our state, and the center cooperates with us on that. You're getting full cooperation from the central government? We're getting good cooperation, yes. So your relationship with the Prime Minister are very friendly that way? Well, they're amiable, yes. The other question which comes about that you have run the state for 25 years. What do you think are the 5 important Naveen Patnaik imprint on the development of state achievements, which they call the Naveen model? Well, we've been in office in this state for 25 years, as you said. And to start with, Odisha was known for its poverty and its calamities. We took office in the year 2000, just the year before, in 1999, there had been a super cyclone in which more than 10,000 people had died. So when we came to office, I'll repeat, we immediately took steps to see that this kind of disaster is not repeated again. We started an institution for calamity protection, which has done very well. In the last 22 years, we've had 3 more cyclones, and we've dealt with it very well. Our motto is to see that there's 0 casualty in all of this. So you have brought it back from 1999 to 2020, the kind of challenges you have faced. Obviously, you have solved them. Have you been able to? Yeah, sorry, you're saying. You asked for a number of achievements.
Also, when we came to office for the first time, the state budget was a mere 5,000 crores a year. There was a constant shortage of making payments even to state government servants. We had to keep pleading for more funds from the center. And today, our state budget is almost 2 lakh crores of rupees. With this, we've been able to do a great deal of good for our people. And you asked about achievements. When we came to office, we were a food deficit state. Today, we're the 3rd largest provider of food in the country. And the 3rd largest provider of food in this country. Also, we have an excellent health program which covers almost all the people of the state. We provide 5 lakhs a year for the health of all males, and for women we provide 10 lakh a year. So I've listed 3 of those, of the 5 you asked for. Now, as far as poverty is concerned, we have raised more than 8 million people in the state above the poverty line. This has been one of the most remarkable achievements, not only in India, but in Asia. So I've told you about our health programs, providing our food. Women empowerment, we started, at the beginning of our government, we started a program for women's self-help groups. Today, we have about 7 million women that are involved in this. It's been a tremendous success, both economically and politically. Other thing which is now the 2024 is coming. Almost 2024, you got factually about 17, 18 months of actual rule before the code of conduct something. Do you have 3 major steps which you would like to take? These are the 3 steps I'll take and get the record 6 victory beating Jyoti Basu also. Jyoti Basu is the record, no, your route. Our government remains constantly concerned with development in the state and, of course, the welfare of our people. And we will continue with these programs, and I'm sure the people will bless us once again. Because what I read, that in 25 years, this by-election result has come today. Normally, you always win all the elections. By-election not important for any government. So what do you think is the mandate today? It is in favor of the BJP or not? What is this? What is the Well, today's mandate of the by-election, we have lost very few by-elections in all the years that we've been in office. In this one, first of all, I'd always respect the verdict of the people. And the MLA had died recently. He was quite popular. His son has been given the ticket. The BJP has held this seat for a number of years. So it's to be expected that they would win this seat. But to talk about the Biju Janata Dal, recently we had the Zilla Parishad elections for all 30 districts of the state, and we won them all. So in a way, that's a good answer.
Just supplementary question. It means in our by-elections proved that in your local election, it is not the Congress which is threat to you, it is the BJP which is threat to you. Is it right? Well, the BJP has become, in the very few last years, the second largest party in the state. The 2024 election will be between BJD and BJP, not BJD and Congress. And also the Congress is very much still there. Thank you very much for giving the answer. Thank you. I'd like to thank you again. I'd like to thank Indian Express for always inviting me to this festival. We'll continue to invite you, sir, as long as you're there, and you will be there next year when we come. You will be there after there for your support and guidance. Thank you. To hear you, and proudly so, about your state, our state, Odisha. May I now request the New Indian Express editorial director to present a memento to our Honorable Chief Minister, Shri Naveen ji. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, God. With the end of this session, we come to the conclusion of the 10th edition of Odisha Literary Festival.
Hello. Can I ask all New Indian Express staffers to kindly come on stage for a group photograph? I would request all the TNI staff to please come up on stage. Sapna, please. Come. You are a part of this. Come. Sivamondi has gone to your senior. He'll come. Anup, Sipogudi. Manisha.